Oh, heard about. जय हिंद सर। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? कैसी है आपकी तबीयत? Pentab. कैसे हैं आप सर? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? एम आई ऑडिबल अखिल सर? Good evening, sir. Jayenge sir, happy Republic Day. अभय सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद एवरीवन। मैं Happy एक फाइनल Republic कोड। Day. हैप्पी प्रजासत्ताक रिपब्लिक दिनाचा विजय असो. टू यू सर। Happy Republic Day, everybody. जय हिंद सर। सर मैं जय सभी हिंद को अभय फोन सर। लगा देता हूँ एक बार अभय सर। अरे पोरवाल सर दिखे मुझे अभी. अरे अरे आपके तो वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब के, बहुत अच्छे हैं. Thank you. थैंक्स टू जयवीर सर, एक प्लेजेंट सरप्राइज दे दिया हैप्पी रिपब्लिक डे का. आजकल क्या चल रहा है, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल रहे हैं, पोरवाल सर मिल रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है. 2 दिन पहले सूर्यकांत जी के साथ था, गवई जी सर के साथ था, आज अभय पोरवाल के साथ था. लगता है मेरा टाइम अच्छा आ गया है. हाउ आर यू सर? गुड आफ्टरनून अभय सर। I'm doing good. Okay, over to you. How do you want to take it forward? And let me know what
language should I talk in? I'm okay with Hindi and English based on how people are comfortable with. सर बस आप बोलिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आप बोलेंगे ना, इट्स लाइक इट्स लाइक अमृत फ्रॉम दी अमृत धारा, सो वी आर रेडी Okay, टू let's not ड्रिंक इट। No, no, not let's not not do not sir, all. not for that purpose. But sir, Yeah. let me introduce yourself from my side. So when I was in 2018, when I was preparing for my PhD, as well as during at the time of my Viva voice, one of the uh, uh, teacher whose name is he is a professor from IIT Madras, sir. Nagar IIT Madras IC engine head. उन्होंने मुझे कहा कि मल्लिका अर्जुन सर, हिज नेम वाज मल्लिका अर्जुन सर। उन्होंने मुझे कहा कि जयवीर, डू यू थिंक योर इन्वेंशन इज नोवेल? आई सेड यस सर। हु सेड नो टू हिज पीएचडी वर्क? एंड दिस जर्नी स्टार्टेड, एंड द जर्नी Awesome. स्टार्टेड लाइक कि व्हाई यू आर नॉट फाइलिंग अ पेटेंट देन? सर पेटेंट होता क्या है पहले वो तो बताइए। बाकी की चीज तो बाद में पता चलेगी। सो उन्होंने रिकमेंड किया मुझे आपकी चैनल देखने के लिए सर। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड वे बैक 2018। आपने भी शायद 2016 या वहां से ही आपकी चैनल स्टार्ट हुई है, माई इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। सो 2018, एट I दैट believe. टाइम, हाँ, तो वहां पर दो पर्सन थे, एक आप है, एक बिंदु मैडम थे, बिंदु वर्मा मैडम थे, जो पढ़ाते थे उस टाइम पे पेटेंट के बिंदु बारे शर्मा में, सर। डीएनसी। बिंदु बिंदु शर्मा शर, जी। बिंदु शर्मा जी ओरिजिन है कि जी, हाँ जी। तो आपका और उनका चैनल मैंने स्टार्ट किया देखना, सर्व किया। पहली रिसर्च वीक गई, दूसरी रिसर्च वीक आई, तब तक मैंने पीजीडी आईपीआर कोर्स ज्वाइन किया। एंड बिकॉज ऑफ यू सर, हम जितने भी थे वहां पर, पीजीडी आईपीआर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, 68 की बैच थी सर 2018 की, जीटीयू की, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सभी ने सर वो पढ़ाते तो वहां पर सभी लोग थे, बट सभी ने आपका नाम रिकमेंड किया है। और आप ही की चैनल देख के हम पैटर्न एज एन एग्जामिनेशन भी क्लियर कर पाए थे। सो वॉट एवर वी आर टूडे, द स्मॉल थिंग दैट वी आर डूइंग, आप भी मानते हो कि आप भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हो, बट आपसे छोटा कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट आईआईटियंस। हम तो एक छोटे से फील्ड से है, और चीजों को थोड़ा सा हम सर उस तरीके से लेते हैं, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा मगअप करना, थोड़ा सा समझना, और फ्यूजन है एक अपना, और वो फ्यूजन से एग्जामिनेशन क्रैक करना। बट हाँ सर, कहीं ना कहीं आपकी झलक सभी को दिखती है, क्योंकि पढ़े ही वहां से, अब रूट कोज नहीं आया तो कहाँ से आएगा? तो डिमिंसिफाइंग का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, हम ऐसा मान लीजिए। Very awesome, awesome. Thanks a सो lot. Thanks a lot, Jayveer. नाउ द फ्लो चार्ट ऑफ टुडे सेशन। काफी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने तो कर ही ली। सो Mhm. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक सर है, प्रदीप पाल सर। सो आप उनका एक छोटा सा सर डेमो वाइवा लीजिए, ताकि कैंडिडेट्स को पता चले कि वाइवा वॉइस में क्या चीजें आने वाली है। Mhm. प्रदीप पाल सर ने पेपर वन दिया है, पेपर वन में उनके स्कोर अच्छे हैं, पेपर टू में भी अच्छे ही स्कोर होंगे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ दिस बैच। Awesome. एंड डेफिनेटली उसके बाद में एक ओपन ग्राउंड रहेगा, जहां पर Mhm. बाकी के सभी लोग जो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, दे विल रेज देयर हैंड एंड विल से समथिंग एंड विल आस्क समथिंग। एंड फिर आपका सर, आप टाइम कोई है बाउंडेशन तो बता दीजिए, वी विल कंप्लीट अकॉर्डिंगली। Okay. So, thanks, David, for that kind introduction. So, my journey, I started in the field in 2004. So, I 2003 graduate, started, did a bit here and there, and then 2004, I thought this was the field that I want to work with. The reason is very simple. I didn't want to be in the labs, but I wanted to be close to the labs, right? I didn't want to work with Texas Instruments or Samsung or AMD doing what my friends were doing there, but at the same time, I wanted to be as close to the technology as I could do. And IP around that time for engineers was the starting point. Not many engineers would kind of think of joining IPR. Usually, it was supposed to be the lawyer's job or advocate's job, right? And understanding legal language around that. Forget about
Legal language is the second step. First step is the English, right? English plus legal language. Understanding these two things together was always tough for engineers. Whatever engineers said and done, it could be IIT, it could be regional colleges, or it could be private colleges. These two combinations never work together for engineers. But I was good at technology, as in I consider myself to be a technocrat that way. I understand technology really well. I don't have to struggle too much onto it. So I was like, okay, I can understand people's technology. I may not be able to develop my own. And then journey just started. Journey started with being an analyst, not doing anything about patent, but just understanding patents, understanding inventions, and understand and cracking them up. So during those time, I was famous for kind of cracking all the inventions open, basically. Kind of novelty and obviousness. Of course, you cannot say anything to be obvious. It's the examiner's job. It's not our job. So, but fast forward 2026, I'm still doing what I started with. Of course, at a larger scale, at a bigger scale, and with a lot more than what I started with. Uh, the reason I'm saying this is when I started, a lot of my mentors and lot my seniors asked me to do law, asked me to become a patent agent. And so 2006, when I saw that, I have gone through multiple cycles of a patent application with clients, I thought that I know a bit about the law. I was able to, and then I saw the paper. I was like, no, I cannot write this paper at all. You should go and see 2006 and 2007's paper. I was like, I'm not going to write all this. Coming from our engineering, where we would just write objectives or we would just write short subjective questions, right? Here, this was like a history paper. I was done with my history in my 10th board, right? I didn't want to write another history paper ever again. So I thought that I'm good. I don't need to become a lawyer. I don't need to become an advocate, and I don't need to become a patent agent because anyway, I didn't want to sign anything up. So my journey kept going. Of course, the knowledge kept on increasing because you keep getting exposure to the newer situations that the client puts you in, right? Come 2016, I was like, okay, now it's been a while. People ask me. I said, sometimes you have to appear for an exam to show that you are credible, right? Once people start working with you, they get to know that you are credible. But till the time they meet you, they don't know who you are, right? Your name could be Abhay Porwal, you could be from IIT Bombay, you could have done 10 or 12 years of job, but then are you a patent agent? Are you a lawyer? Then how do I entrust with you? So at that time, I thought that let me read the Patent Act, as in appear for the exam. I opened the paper and actually I looked around for what is available. Absolutely nothing was available. And the only videos, again, when I say please don't take anything in negative connotation, when I saw the videos of people who were doing good job for others, right? Anybody who is putting anything for free on the YouTube is doing something good for others, is what my they could charge nominal also, whatever, right? But they're putting their efforts in doing something for good. But people were just opening the pages and reading through it. I could do that also. My wife could do that for me, right? Why do I need third person to do that for me? So I was like, no, this is not going to work for that. So I read through it. I created my own because, as Javier said, that we all have cracked some exams in our life, and we know the fusion technology basically, right? Read and crack the exam. So we know some mantra around it. So I did the same. I, and I was like, okay, I prepared it well. I was a diligent student. I'm a diligent student always. I put my effort. So I was like, I'm done. And because the exposure was already there, I was not mugging things up. And my only problem is what am I supposed to write exactly the way Act says? So I took my chances and said that no, I'm not going to write here and there, subscribe to, prescribe to. No, I'm not going to write all that. I am going to write flowcharts. I'm going to write this is how it is because it's what my client wanted me to say, right? Clients would not ask you what page, what section number, right? Client would just say, tell me the solution. Right? That's about it. So I was like, I'm going to provide the solution in the manner where, there would be a portion where would I write section, there would be a problem where I would say, this is the problem and this is the solution. And paper one actually, it's always easy as per me. So I don't know now. So yeah, everything happened. I cleared the paper easily. I got enough marks to kind of chill, go through the Viva and all that. I wanted to take my first flight out of Chennai, so I was the first one. There were no roll numbers there, so I just stood there in the line first, take my Viva first in the morning, and so that I can go back to Bangalore. There were others who were like, okay, I don't want to go first because I want to know what questions that they are asking, right? I always thought that
what are they going to ask? They are going to ask the same thing that you already know, right? So there is one saying which I always say, if I like you and if I want to pass you, I will ask you your mama's name or your uncle's name, right? If I don't like you, I will ask you my uncle's name. As simple as that, right? So if there is a genuine person in front of you, they are just going to ask you the knowledge that you are supposed to know, right? So that was it. And why did I start with this channel? So I don't know how much you know about me, but I'm part of a company called IP Pro. I run that show I've been running that for last 20 years. So we had so all my folks also wanted to appear for patent agent exam. So I said that let me help you out. So I conducted a 3-month in-house session, created everything for them, and finally I was like, if I'm doing for you, might as well do it for the entire India, right? So that's where it started. And the initial idea was, so I have kept my initial videos also on my channel where I was just talking. And then I said, can I improve it? Can I improve it? And then, that thing of how do I improve started, and all the videos are out there. And I'm happy that a lot many people have loved my work, and people like Javier are kind enough to come forward without any hesitation, admit to the fact, coming from the same industry, coming from, he also is uh, kind of giving it back to the society in whatever way he wants. But then also he has this big heart of kind of acknowledging, right? Acknowledging the fact that, I am a Abhay's student and I am passing on the knowledge, right? So that's a good thing. So that's the same way that we would just pass it on. So now coming to this particular session, how we want to do it. So I have not prepared anything because Viva, we don't prepare anything. So for this session, we don't prepare anything. So what do we do? So Pradeep, I think we are supposed to talk first, right? Yeah, So yeah. so Pradeep, before I come to you, right? So for this is for everybody. Now, what is what is a role of a patent agent? If I were to ask this question to everybody, one by one, each one of you can come online, give only one line answer. Don't go about sections. I don't want to hear sections. What is the role of a patent agent? Pradeep, you want to go first? You can go first. Yeah. For me, the patent agent, I will be acting as a bridge between a person, a researcher, to get them a patent because I am from a technology research background. I can Mhm. support them in what field they have to research for, and parallelly acting as a bridge how to save their invention, how to file for a patent. I'm Okay, seeing myself as a bridge between those two, I can say the spaces, researcher to getting a patent. perfect. No worries. Anybody else? Can Because if I you go don't next? talk, yeah, of course. See, and Yeah. one thing that is there is I would want each one of you to talk, because if you don't get that confidence of talking here, then Viva is about confidence, right? And if possible, if your surrounding allows you, I would want to see you, if possible. Otherwise, it's all fine. Hi, sir. This is Jyoti here, Jyoti Tiwari, and I'm really a big fan of your videos. Apart from watching Javier, sir, I have been watching all your videos, and two things I like it. One is never burn the bridges. That dialogue of yours, which is like I think you always give in all the videos. And second one that I like is the voice. The voice modulation, what you do in teaching, I think that is something people like me who are not very comfortable either in Hindi. If someone fully talk in Hindi, also it's a difficult parameter for me. If you talk fully in English, at times even that goes like a bouncer. So I'm a big fan of your video. And currently, the question that I have for you is, sir, that see, I'm a combination of an engineer as well as an advocate. I was an engineer. I was a product manager earlier. After working for 12 years, I shifted to the advocacy part of it after completing my LLB and LLM. And I'm currently doing my PhD that is in patent. So why I have picked up patent agent exam is because one is that I'm not interested in litigation part of it. That is not what I'm intending to do. I actually wanted to open my own firm, something to do with a combination of litigation and the patent registration. But I do not want to practice myself. I rather wants to set up something of my own.
Now, to be frank with you, this is my intention. But that said, I don't know how I'm supposed to present my case if I get selected for the Viva. What I understand is that the examiner are not too inclined towards the advocate and people who are from advocacy background. So I would definitely need your suggestion, like how I should be presenting my case to them when it Yeah. comes to the introduction. So, Madam Tyagi, first of all, I would want to correct you. You said that you don't feel comfortable talking in either language. And while you were narrating your story, I couldn't even find a problem in it. So why are you putting yourself down? You were as good as anybody. Thank you for that. I belong to so many different states, so I always get confused what I should introduce, myself. Like, Acha. and you said, So, thank you see, for so that. look, my question remains for you, also, what is the role of a patent agent in one line, please? To ensure that whichever application you pick it up should not get rejected. Okay, no worries. Let's move on. Hi, Abhi sir. This is Dr. Dinesh, professor and IPR head at Chandigarh Group of Colleges. Wow. Thank you so much for coming over here. सबसे पहले आपका अभिनंदन and अभिनंदन जयवीर सर का जिन्होंने आपको बुलाया. Thank you so much, Jayenge sir, and happy anniversary to you. If you are listening, are you here? यस सर, 10 बरस खत्म करके। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा जोखिम आपने उठा लिया, आज यूनिवर्सिटी वाले दिन आप पहुंच गए क्लास में। अरे सर ऐसा बोलिए, अभय सर ने बचा लिया। सही है सर। सो अभय सर, आपकी वीडियोस और सिर्फ जयवीर सर की वीडियोस देख करके मैं पिछले साल 15-20 दिन पढ़ करके पेपर 1 में 47 नंबर थे मेरे, पेपर 2 में 62 मेरे को मिला था। वाओ, वाओ। तो सिर्फ 15 दिन मैंने आपकी वीडियोस देखी है और सिर्फ जयवीर सर की देखी है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जयवीर सर की क्लास में लगाऊंगा, कारण ये था कि हिंदी में समझा रहे थे। तो हम लोगों की थोड़ी इंग्लिश कमजोर है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है आपकी। So for me, patent agent role is to basically guide its clients about the Patent Act, the patent rules under which their innovation can be filed and can be protected. तो कोई भी अगर innovation में patentability criteria है, that has to be checked, and further as per act and law, what can be done to save their innovation. Yes. Okay, good. Who else? Yeah, good afternoon, sir. I'm Monica. Actually, I'm a fresher in this field और मैंने 2022 में ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया बायोटेक्नोलॉजी में, और मुझे अभी तक तो मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब एंड ऑल का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, the patent agent is a licensed professional who acts as an intermediary between inventors and patent office to draft, file, or prosecute patent application. This is my point of view. Perfect. Okay. Thank you. Thank you, Monica. Anybody else? सर प्लीज। हेलो सर, अनिल Yeah. हियर सर। Yes, Abhi. सर, इन्वेंशन को लीगली प्रोटेक्शन कैसे मिले, उसके लिए मेजर रोल पेटेंट एजेंट का रहेगा सर। Okay, makes sense. Anybody? Hello, sir. Yeah. This side Akhil. Sir, the role of the patent agent is to assist the client for the protection of their inventions. Okay. Anybody? Sorry, as in I want everybody, so keep going, keep going. किसी और को नहीं बोलना तो should I go ahead? सर मैं Sir, कह as दूं you एक बार। मैं बोल दूं? जी सारिका प्लीज प्लीज। सारिका सर। जी सारिका मैडम, एंड फिर विनोद सर, एंड फिर मैं। जी सारिका ओके मैडम ओके। प्लीज। हाँ सर, जो हमारा जो पेटेंट है, जो जो भी इनोवेटर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली लॉ क्या है।
वो उनका हमारा काम है एक्चुअली। लॉ क्या है, इन्वेंशन किस में आता है, कोई इन्वेंटिव हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो हमारा मेन रोल है। जो भी हम इंडिया के लिए आगे जाके जो हमारा मेन अभी चल रहा है कि सुपर पावर इंडिया का करना है, तो इसमें रोल, मेजर रोल हमारा है ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन आ जाए। और जो भी बीच में जो भी गैप है वो हम कंप्लीट कर दें। ओके, प्लीज विनोद सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। पहले मैं सर के बारे में बोल दूं कि पहले आंसर बोल दूं? अब सभी आंसर बोलेंगे, सर के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सब नहीं, आंसर एक बोलेंगे। लाइन तो बोलना ही पड़ेगा सर एक्चुअली बिकॉज बोलिए सर, ये बोलिए हम सर। लोग तो जयवीर सर ने मतलब हम लोग आई डोंट नो इट्स एक्सीडेंटल पेट एजेंट है सर। हम तो पास कर गए। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट जयवीर सर ने ही इज द फर्स्ट टीचर हु आस्क्ड मी टू सी योर वीडियो प्रैक्टिकली। तो जनरली टीचर लोग हमेशा अपनी ही बड़ाई करते हैं, मैं या अच्छा अच्छा, एंड ही इज वन ऑफ देम हु हैज आस्क्ड अस टू सी योर वीडियो। एंड आफ्टर दैट आपने जो बोला सब, बाकी सब लोग ने बोला आई रेसिप्रोकेट एंड सिंक्रोनाइज विद द सेम फीलिंग्स। So I don't want to go deep थैंक in यू। that, but I hope you understand the emotion. Answer for एब्सोल्युटली। me sir, अभी आजकल कंप्यूटर का जमाना है, पीसी का। So I think patent agent is like a PC, you know, means protecting the right of an individual, or individual से ज्यादा innovator, at the same time commerce, helping them to commercialize it. Because many a times inventor को पता तो चल जाता है कि उसको पेटेंट करा सकते हैं, करा लेना, but again guiding them how you can commercialize this, because unless and until it is giving you some return, इनोवेटर को भी बाद में आपको उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो ही इज द, जो आपने बोली थी ना ज्योति मैडम, ब्रिज जलाने की बात करते हो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आदमी का इनोवेशन के बीच का वो ब्रिज है, हु हेल्प हिम टू क्रॉस द सी और रिवर, वट एवर यू से, टू अचीव what he is not thinking he can achieve. परफेक्ट है, परफेक्ट है। जयवीर, यू वांटेड टू से समथिंग? जी सर। जयवीर सर। जी सर, अश्विनी सर है। जी जय हिंद सर। जैन सर। अश्विनी, जय हिंद सर। अश्विनी सर। जैन सर, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? अश्विन, या। गुड आफ्टरनून सर एंड जैन सर। सर आपके बारे में तो अब सबने बोल दिया है, तो मुझे एंड सर मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं इतना कहूंगा कि सर डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर अस। ऑलरेडी मैंने भी विनोद सर की तरह मैंने पास कर लिया सर एग्जाम, बट सर कहीं ना कहीं आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारे पास होने के लिए। एंड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन सर, मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक सर आई फील कि पेटेंट और आईपीआर इज नथिंग, इट्स मोर लाइक अ नॉलेज इकोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए। जैसे कि इकोनॉमिकल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नॉलेज ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, एंड पेटेंट इज वन ऑफ देम। Like so, being as a patent agent, I am proud to say that I can able to make my country to a next level of position where we can call this as a knowledge economy, and where we can develop and we can do lot of things with help of the patent, so that ultimately the commercial and economical growth of the country will happen at one point of time. या, या। जय हिंद सर। As far as my knowledge is concerned, there are four pillars of being a patent agent. One of them is linkage between the act to the natural person. Second one is observe, क्या क्या दुनिया में चल रहा है. थर्ड वन इज एनालाइज, कि जो इवेल्युएशन दिया है हमें क्लाइंट ने, वो क्या पेटेंटेबल होने के लायक है कि नहीं है. एंड फोर्थ वन इज इफ इट इज पेटेंटेबल देन विजुअलाइज, कि भाई इसका पोटेंशियल कितना है. वो यूनिवर्स के टर्म्स में होता है कि भाई कोई इन्वेंशन है, वो एक अकेले क्लाइंट के पास ना रहते हुए पहले 20 बरस के लिए उसको रॉयल्टी मिले वो पर्सन को, और बाकी की जिंदगी भर, यानी फिर टर्म्स जितना ही कंप्लीट हो जाता है, फिर वो इन्वेंशन पूरी दुनिया में स्प्रेड हो और उससे कभी भी पीछे ना जाए. हमारी यूनिवर्स उस इन्वेंशन से पीछे ना जाए, उससे आगे ही बढ़ती रहे. सो दैट्स व्हाट आई. परफेक्ट। कैन आई गो अहेड? वेटिंग फॉर यू सर. ठीक है। सो हिंदी इंग्लिश, मुझे लगा थोड़ा क्राउड हिंदी फोकस है, तो मैं मेरा भी आई थिंक त्यागी मैडम जैसा हाल है कुछ। मैं एक लैंग्वेज को पकड़ के नहीं बैठ पाता, इंग्लिश को पकड़ लेता हूँ, हिंदी को पकड़ नहीं पाता। ठीक है। तो बेसिकली सी द रोल ऑफ अ पेटेंट एजेंट, हमने हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, राइट? डोंट गेट मी रॉन्ग एट ऑल। हाँ, मैं सबको ग्राउंड करना चाहता हूँ यहाँ पर। सी पेटेंट एजेंट अगर आप देखोगे तो उसका रोल क्या है,
See, when we say that we have to explain that we have to help the inventor to protect the invention, or we have to commercialize the invention, or we want to help our knowledge economy, or we have to, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, right? For a patent agent, even if you are not a patent agent, if you have the caliber to help somebody do all this, you can do that, right? Patent agent, अगर देखा जाए तो is only a rubber stamp, is signing the papers on behalf of applicant, right? But what all are we doing in between that? So मैं अगर आप लोग ने मेरे वीडियो देखे हैं तो उसके अंदर एक चीज जो मैंने बोला है, व्हाट इज आर एक्ट, अगर उसको लॉ नहीं बोलना है तो एक्ट है क्या? एक्ट ने क्या कर रखा है, आइडिया को या फिर पेटेंट एप्लीकेशन को या पेटेंट पेटेंट को तो नहीं, आइडिया की जर्नी को डिफाइन कर रखा है, राइट? आइडिया कहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनली कहाँ तक जाता है, वो कमर्शलाइजेशन की बात नहीं करता पेटेंट एक्ट, राइट? एक्ट को मतलब ही नहीं आप क्या कमर्शलाइज कर रहे हो, आप उससे कमा पा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, उससे मतलब ही नहीं है। उसको बस ये मतलब है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अगर मैंने आपको 20 ईयर्स के लिए ग्रांट दिया है तो आर कंट्री शुड गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट ग्रांट, क्योंकि फाइनली सोशलिस्टिक इकोनॉमी है हमारी, राइट? तो वी कैन नॉट हैव मोनोपोली हियर, वी हैव टू हैव अ गिव एंड टेक। तो एक्ट को कमर्शलाइजेशन से मतलब ही नहीं है, बट एक्ट फॉर्म 27 की बात क्यों करता है ना, फॉर्म 27 में क्यों है नहीं बताऊंगा, ऑल ऑफ यू नीड टू नो अबाउट इट। फॉर्म 27 की बात क्यों करता है, ताकि दे गेट टू नो दैट यू आर एक्चुअली गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। नाउ हाउ आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? बाय वर्किंग द इन्वेंशन इन इंडिया, राइट? खत्म। उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं, तुम कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक्ट ने बोला है कि एक आइडिया है, उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है एक इंसान को, राइट? जहां पर भी आइडिया है, जहां पर भी प्रोटेक्शन है, जहां पर आइडिया है और जहां पर ओनरशिप की बात आएगी तो लोग लड़ेंगे आपस में कि मेरा है मेरा है। लोग पहले भी लड़ सकते हैं, लोग बाद में भी लड़ सकते हैं, और लोग लड़ते ही रह सकते हैं, राइट? अब तो बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी आपकी, तो एक्ट क्या करता है, एक्ट ने सोचने की कोशिश करी है कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, और उन सिचुएशंस के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि इन सिचुएशंस को आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब इसको आप लॉ बोल लो, सेट ऑफ रूल्स बोल लो, या फ्रेमवर्क बोल लो। अब पेटेंट एजेंट का रोल केवल यही है। अगर कोई एक ब्रोकर आता है, आपका रियल स्टेट ब्रोकर आता है, उसको पता है कि अगर मुझे एक डील साइन करवानी है आप लोगों से, डीड डीड ऑफ असाइनमेंट, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, राइट? तो क्या क्या क्लॉजेस होने चाहिए उसके अंदर, कैसे रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसका एक प्रोसेस है, ताकि आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। सो पेटेंट एजेंट इज नॉट अ ब्रोकर, पेटेंट एजेंट इज नॉट अ ब्रिज, पेटेंट एजेंट इज नॉट एन एनेबलर इन माय व्यू। पेटेंट एजेंट को बस ये पता है कि आप कौन से स्टेज ऑफ अपने आइडिया में अटके हुए हो, एंड आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट? एंड कैन आई ऑफर अ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नॉट मी, बट डू वी have I seen or have I read this problem somewhere else? And does my act provide a proper statement or answer to that one? So you are a doctor who knows a proper prescription of a particular problem that your applicant is facing with. So कई बार क्या होता है, during, I have interacted with many of the folks now in last 6-7 years, and people keep getting confused about कमर्शलाइजेशन, लाइसेंसिंग, लिटिगेशन। नहीं, पेटेंट एजेंट का रोल ही नहीं है। लाइसेंसिंग में भी रोल नहीं है, लिटिगेशन के अंदर भी रोल नहीं है, कमर्शलाइजेशन के अंदर भी रोल नहीं है, राइट? लाइसेंसिंग इज प्योर प्ले टेक्नोलॉजी, लिटिगेशन इज लॉ प्लस टेक्नोलॉजी, एंड what else did I say? Commercializing, of course, it's completely business angle to it, right? तो पेटेंट एजेंट, ऑफ कोर्स, हम लोग यही सोचते हैं कि हम केवल और केवल वी कम इन टू पिक्चर व्हेन somebody has invented something. That's a very narrow focus to look for a patent agent to be in it. During my day-to-day activities at the firm that I work in, it's not the idea that I'm discussing every day, right? There is a VC, a fund manager coming to me saying that I have invested in this particular company, and this company says they have filed 10 patents. Can you see those 10 patents? Can you please tell me how strong those patents are? Can you tell me if those patents are complying with the regulations, complying with whatever, right? Because हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है अपने इन्वेंशन को लेकर, right?
तो पेटेंट एजेंट अगर कंप्लाई की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, आपने फॉर्म्स बराबर फाइल किए हैं, क्या आपने फॉर्म 3 बराबर फाइल किया है, क्या आपने क्लेम्स बराबर लिखे कि नहीं लिखे, आपका प्रोसिक्यूशन कैसे चल रहा है, क्या आपने रिस्पॉन्स फाइल किए हैं, क्या आपने क्लेम्स को बहुत अमेंड कर दिया है, वो सारी चीजें, राइट। तो पेटेंट एजेंट जब भी कोई बोलता है तो पेटेंट एजेंट समझिए आपको इस तरह से दे रहा है कि ऑफ कोर्स वी विल हेल्प द इनोवेटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर साइड. We cannot give any guarantee for the protection. It's their invention, it's not our invention. If somebody has created a rubbish invention, even if you put your magic to it, it still remains rubbish only, right? So you cannot help anybody to protect. You can only guide them that this is the process to file a patent application. And this is the process to draft a patent application. Now, not every patent agent knows how to draft it, or not every drafter is a patent agent, right? So it's a collaboration of many people. I have worked with many folks who don't know how to draft. I have worked with many drafters who are not patent agents, right? So, so that is a very small scope of thinking that patent agent is only at the idea phase. You can come into picture where there is a let's say two inventors. One of the question, somebody actually put a question on my channel where they wanted to understand what would be the way out of it. The two inventors were working together in university. One investor went ahead. One inventor left the job, went out, and then filed a patent application on their own name, right? Now, patent agent has come into picture, right? Why? The application is already filed. Why patent agent has come into picture now? It is not an idea stage at all. So we are not bridging. We are not protecting anybody. We are finding a solution to a messy problem that the person has entered into, right? Because we know Patent Act provides a solution to. So think of the patent ecosystem or patent agent ecosystem as a problem solution approach, where a person can get stuck with problems. Can I offer them a solution? And in real life, when we interact with the clients, we don't say section 64, section 25, section 47. No, client only wants to know, is there a solution to it all? That's about it. And you just tell them that ये solution है, ये information लगेगा और ये signature लगेगा. They don't even ask what form to sign, where to sign, what document to give you. You provide everything and they give you this. You just have to give them that, right? So why this is important? Viva should be considered that way. See, by now, I'm sure Jaivir has helped you to learn the entire act in terms of what all sections are there. You have already appeared for paper one, and you are confident about your preparation. You have given out paper two also. So paper two also, I have not seen paper two. I just, because people were crying so very much, I had to see one quick question about drafting and another question. Otherwise, मुझे अच्छा नहीं लगता पेपर सॉल्व करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पीछे पढ़ते हैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट एंजॉय द प्रोसेस. But these are also problem statements, right? तो अभी हमको वाइवा के लिए अगर जब प्रिपेयर करना है, you guys are already prepared, to be very honest, and everybody's viva will be a different viva. Now 3:30 I will only talk about viva point of view. Now I already have a video, Javier. I don't know whether you have seen that video or not, but it's a big video where I talk. I think I might repeat what I've spoken there, but then let's see. तो अभी अगर वाइवा के लिए हमको प्रिपेयर करना है, so it's an interaction that will be driven by you. Now, a viva for, let's say, Jaivir, a viva for Abhay, or viva for Pradeep will be different, because the way we introduce ourselves, uh, what our resume is speaking about it, right? If I were to talk about myself, I will say that I graduated. So yeah, the question, if I remember one typical question, so it was an interesting question. So as I said, 2016 is when I actually appeared for my patent agent exam, or 2015, I don't know. Yeah, one of those years. So the first, I introduced myself, and then they said that you say that you have been working in this field for 12 years. Your resume says. So why are you appearing for the patent agent exam after 12 years? So interestingly, the Patent Act was there on the desk with one of the examiners. And it was, of course, it is 120, 150, whatever page it is, right? So I said, it took me some time to understand 150 pages. And today I feel confident that I have understood 150 pages. Hence, I am here. That's about it. And from there on, it went on opinion, your opinion about software patents, your opinion about this, your opinion about that. I was not asked to write any claims. I was not asked to how would you respond to FERs, or how would you help this or that, nothing of that sort. So it was all about, because I was
so heavy on software around those days that our opinion discussion lasted for 5-7 minutes about software patents only, and why I was so hell bent to have software patents, and why I think that those deserves a patenting right as well. So when you introduce yourself, let's say somebody, I think somebody is from biotech, somebody would be from somewhere else, right? So when you start with that, so that is going to, if they are actually really interested in your profile, that would be the first cue for them to take the next question. Let's say if as soon as they say biotech, right? Or as soon as they software, or as soon as somebody says pharma. So the next very simple question that comes out is, okay, can you talk about what are the inventions which may not be patent eligible as per your industry? So because you are from that industry, you have read section 3 also. So there could be section 3B that comes to everybody's mind all the time, right? Then there is a method of treatment that comes to mind, then horticulture that comes to your mind, right? So all these, and as you say that, then the next question that may come from that question only is, okay, that is a blanket. Is there a blanket ban on such domain, or is there a way out of it? So you think about it that, okay, I have talked about section 3D, which says that similar compounds cannot have a patent protection. But at the same time, I know that there is a solution provided by the Patent Act, which says that if there is an enhanced efficacy. So when you say that, right? So you say enhanced efficacy. The person is going to say, okay, now you have used another term, efficacy, define efficacy. So there is it therapeutic efficacy, or if I were to create a capsule which has more bioavailability in your body, that can that be considered as bioefficacy? Right? So the questions are interlinked the way you drive, and the more you talk, and the more you kind of say something which you're not confident, and then don't take them into that direction. Let them stick to what you have done, right? If you are good at analytics, try to bring it there that I can help the inventors to kind of ensure that their efforts don't go waste. They don't file patents which are not worthy of it. Now, how do I say worthy of it? If it is technically enhanced, or if I have to talk from the patent parlance only, क्या वो इन्वेंटिव है, क्या वो नॉवल है, क्या वो ऑब्वियस माना जाएगा, या फिर उसको बहुत ही नैरो इन्वेंशन मिलेगा जिसका कि आरओआई कुछ नहीं है, जिसका एनफोर्समेंट कुछ नहीं होगा, राइट? Try to say in those senses. Don't become lawyer, don't become an advocate there, right? Become be very, very worthy of your resume, what you have done so far. I think Monica was the one who is a fresh graduate, I think, right? Monica Yes, or sir. Gabby, one of them, yeah. So let's say if Monica were to be asked a question that you have just completed your graduation, why do you want to get into IT, right? So what is the answer for it? There is no kind of bread and butter answer to it, right? That everybody would say the same answer, right? Monica may have her own things to say. Like I had an answer. Why do I wanted to get into the field? Hello. Because I was not. Yeah, Monica, Sir, can you please repeat actually? okay. So it's fine, Jaydeep, it's fine. So basically, the question, it was not a question, but I was taking your example. But if you have an answer for it, why not? So because Monica, you have just kind of got out of the college. You don't have any experience of any job as such right now. So why would you want to become a patent agent? That could be a question coming your way. Uh, What would be your response? uh, According to me, sir, like during my final year project in masters, right, which was based on Shigella sonnei, a bacteria, right? I want to protect my work and start exploring about how to file a patent. जो कि नहीं हुआ था फाइल बिकॉज इट इज अ बैक्टीरिया, क्योंकि मुझे अभी पता लगा. देन आई कम टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस इन द यूनिवर्सिटी डिड नॉट गेट द पेटेंट प्रोटेक्शन राइट्स, एंड देन आई लर्नड अबाउट इंडियन पेटेंट सिस्टम सर. Or Okay, from there, I found it interesting, and it allows protection of invention in healthcare and biotechnology. perfect. So interesting. So because you have a nice story to go about it, and you have a nice philosophical angle to it. So I don't want another Monica to go through the same pain that I went through, right? So whatever comes to your mind, that one. So that's a good. Just a second. Huh? So I have a dog with me, and he is always around me. So he wanted to just go out because he had enough of patent stock. So
So good. So one thing that you should be clear about is why do you want to become a patent? Sarang, is that you? Wow. Okay. So why do we want to become a patent agent? Is one liner that you should, it's a very genuine answer that you should have. Anything, any kind of too much of a philosophical or too much of a Gyanish answer, no, Gyan will not work in your favor. Simple. I am interested in learning the technology. I find myself to be technically acute and astute. I can understand any technology. At the same time, I'm I understand the law also. I understand the act also. So as one of you used the word bridge enabler, so I want to help people to understand the patent system in the simplest of the manner so that they can protect their ideas. And at the same time, I'm at the forefront of the technology innovation. That should work your way, right? Don't go too gyan or philosophical about it. Why do you want to do it, and what is helping you to do it? And then moving on, once you do this, your resume will say whether you are an IT guy, whether you are a pharma guy, biotech guy, or whatnot. Some of you are advocates also, right? And of course, few of them that I have interacted with are in a college setup where they are part of IP cell or they are student innovators, but then there is no IP cell to it. So they want to help their patent, they help their college also to develop a good IPR ecosystem. और अभी का जो सीजन चल रहा है, right? The entire startup India or innovate India, all that, right, is a good enough enabler that we think that uh, we lack. So there is so much of work and there is so much of awareness that needs to be spread out, but yet there are not many professionals who can do it. Hence, I want to be that person who can help. And given my background, I think I can understand technology and I can understand this also. So try to weave your story along with our ecosystem, how India is developing, right? Now, don't go into that. I want India to become the best in the business and all that. No, हमको वही करना है जो हम करने के लिए बैठे हैं, right? इंडिया दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. इंडिया अच्छा बन जाएगा अपने आप. बट अभी अभी हमारा क्या रोल है? हमारा रोल ये है कि गवर्नमेंट अगर पुश कर रही है इनोवेशन पे, तो आई वांट टू बिकम दैट टाइनी बिट टू इट आल्सो. मुझे लगता है इनफ जगह है सबके लिए, एंड आई वांट टू बी वन ऑफ दोस आल्सो, राइट? सो ट्राई टू स्टिक टू इट. देन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस. अब सोच के बैठना कि now the entire act is open in front of you. If there is no technology question that has come to you, so entire act is open in front of you. See, these days Delhi Patent Office is taking too much of class of our patent office in terms of how their decisions are revoked, how they are asked to decide again, all that, right? So ensure that you have knowledge about few of those cases so that you know that you can take a stand also that, this was the issue that was kind of talked about by the Delhi High Court, and this is what they wanted the patent office to talk about. They may or may not do it because they are at the receiving end, so they may not want you to say anything about it, right? The one basic question was why are if you look at the first examination reports or the response that comes from there, they don't go in detail about why they are rejecting something. They are just rejecting. Oh, the invention is found to be non-inventive. Why? They don't even say that, right? Or because of this particular reference or that particular reference, the invention is not considered as inventive. Why? They don't even say. If there's a 200-pager document, they say that read the entire 200-page document. And this is why the invention is not inventive. So I'm saying all this because I go through every day. I have hearings, I have responses to be filed. So I go through these 200 pages, but the examiners have not gone through these 200 pages. You can see as when you talk to them, right? So, but then the Delhi High Court has actually caught them and said that please behave properly. But we cannot say all this to patent office, right? We don't want to burn our bridges, so we don't say all that. So अभी क्या सोचने का हमको? Where was I? So now at this stage your entire act is open in terms of they can give you a solution. That let's say they can come to Monica and they can say that Monica, you were saying that you had created something about in your thesis, you think that it was patent eligible, and your professor also was one of your contributors. Now you are out of the college already, and your professor has filed a patent on it, and you got to know through a publication. Let's say it got published. Simple. All of us know what is happening here. Monica is not happy about the situation. So what do we do? So Monica has to provide a solution to it.
तो क्या कुछ नया पूछा है क्या इसके अंदर जो आप लोग को नहीं पता? इसके लिए क्या प्रिपेयर करोगे? इसके लिए क्या प्रिपेयर करोगे? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए जब भी मुझे पूछते हैं लोग सर वाइवा के लिए कब प्रिपेयर करूं, तो मैं यही बोलता हूँ 2 महीने पहले प्रिपेयर करना चाहिए था वाइवा के लिए, अभी नहीं करना चाहिए था, राइट? तो वाइवा के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, बट इंश्योर करना है कि जो प्रिपेयर किया है वो भूल मत जाओ बस लिखते ही, और कुछ नहीं, राइट? प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो अगर हमें इसे ही देखना है, तो ये सीधा सीधा सा केस है, इन्वेंटर्स के बीच में नोक झोंक है, एप्लीकेंट्स के बीच में नोक झोंक है, हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल है सीधे सीधे, क्योंकि वो बोल रहे हैं पब्लिकेशन से पता है चला है मुझे, तो मैं अभी भी प्री ग्रांट अपोजिशन पे बैठा हुआ हूँ, तो आई विल गो फॉर प्री ग्रांट अपोजिशन राउट। अगर ग्रांटेड हो चुका है तो आई विल गो फॉर पोस्ट ग्रांट, और ग्रांटेड हो चुका है तो सेक्शन 64 है मेरे पास। मगर मैं नहीं चाहता कि इन्वेंट पेटेंट जो है पूरा ही थ्रेश आउट हो जाए, ना उसका रहा ना मेरा रहा, तो फायदा क्या होगा, राइट? तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि पेटेंट पे अगर उनका नाम रहना है तो उनका भी रह जाए और मेरा भी रह जाए। मुझे इस पेटेंट को पूरा रिवोक करके फायदा कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडो पाक तो खेलना नहीं है, हमें तो मतलब सबका विकास और सबका भला करना है, तो वो चीज है। तो उस तरह से सोचना है कि मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पूरे पेटेंट को थ्रेश करना है तो ऑफकोर्स आई डोंट केयर। सो अगर थ्रेश करना है तो थ्रेश करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। अब आगे चलते हैं। अब लाइसेंसिंग की बात आती है, राइट? तो लाइसेंसिंग यूजुअली पेटेंट एजेंट का रोल बहुत कम हो जाता है लाइसेंसिंग तक आते आते, बट देन ऑल्सो फॉर नॉलेज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी चीज है। अब अगर जैसे कोई लाइसेंसिंग की बात करता है तो हमें पता है कि हमें आड़े तिरछों में तो लाइसेंसिंग की बात करनी ही नहीं है। अगर किसी ने एक रेड इंक का पेन बना रखा है और वो बेच नहीं रहा है पब्लिक को, तो क्या तुम उसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लोगे क्या यार? मतलब, है ना? तो वो सोचने कंपलसरी लाइसेंसिंग हर जगह नहीं लग जाती है, राइट? उसमें नेशनल थ्रेट नहीं आती, नेशनल सिक्योरिटी नहीं आती, तो बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखो, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, एंड यू नो एवरीथिंग। मैं रिपीट मोड में चला जाऊंगा अभी, मैं आई कैन कीप थिंकिंग अबाउट वेरियस अदर सेक्शंस आल्सो। बाकी तो यार अगर रटना है उनको पूछना है तो वो पूछेंगे 25(2)H क्या है, तो हाथ जोड़ लेना कि सर नहीं पता मेरे, है ना? क्योंकि अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने मामा का नाम पूछ लिया है, आपके मामा का नाम नहीं पूछा है ना? वो हाथ जोड़ लो, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे वो गलत आंसर है ना? आप ये बोलो कि मेरे को बहुत सारे ग्राउंड्स पता है मगर मुझे ये नहीं पता कि 25(H एग्जैक्टली क्या है। मुझे 3(H पता है, मुझे 3(K पता है, कि मुझे 3(D पता है, मगर मुझे 25(H नहीं पता है, राइट? हमें 100% लाना ही नहीं है कहीं पर भी यार। मतलब वो अगर वहां बैठे हैं तो उन्हें भी तो दिखाना है कि भैया बॉस कौन है, राइट? ठीक है यार, तो दिल पे मत लो, ईगो पे मत लो, और नर्वस मत हो। इट्स जस्ट एन इंटरेक्शन, जस्ट एन इंटरेक्शन। तो मैं यही चाहता था कि हम लोग जब सेशन चालू किया था तो आई वांटेड एवरीबॉडी टू टॉक, कि even though we have seen each other, I have seen you guys through my comments and you have seen me through the phone screen or iPad screen or laptop screen, right? But right now अभी भी स्क्रीन से ही देख रहे हो, बट देन हम बात कर सके वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं नहीं जानता यार कहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ पर ये वीडियो कहाँ जाके निकलेगा, मुझे वो भी नहीं पता, बट देन ठीक है यार, है ना? सर तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी फॉर बत, बताइए इंटरप्शन। बताइए। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है बायोटेक में, तो मैंने आपको ये भी बताया कि शिजेला सोनाई पर प्रोजेक्ट था, तो इज इट हम्म कंपलसरी कि मुझे वहां पर बताना होगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया था वो शिजेला सोनाई पर ही था, या फिर बायोटेक मास्टर्स इन बायोटेक से ही काम चल जाएगा? वो जितना पूछे उतना बता दो, और आपकी इच्छा पे। अगर देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं एक चीज कहूँ, जितना बोलोगे उतना फंसोगे। ओके। और गलती से वहां पर कोई एक्सपर्ट बैठ गया, मैं आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो आप आपका जो बैक्टीरिया का जो नेम है, तो शिजेला सोनाई, एस सोनाई। आई वुड नॉट इवन डेयर टू से दैट, फॉरगेट अबाउट इट, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ गलती से वहां पर वो कोई बंदा बैठ गया और उसको सब मालूम है उसके बारे में, तो आपके नेक्स्ट 15 मिनट तो गए। पेटेंट ओके। एक्ट, पेटेंट एक्ट की बातें तो होंगी नहीं होगी, दैट गाय वुड जस्ट ट्राई टू प्रूव दैट उसको कितना पता है आपके डोमेन के बारे में। ओके। तो आप अपना प्रोजेक्ट बताओ बायोटेक्नोलॉजी से, अगर कुछ बताते हो तो एक बैक्टीरिया, बस। अब क्या बैक्टीरिया था पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स यू आर इनटू द जोन। फिर बताइए, ओके। फिर बताइए। ओके। एंड ऑल ऑफ राइट। कोर्स बिकॉज आपने थीसिस करी है तो अब एक बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए।
है यस सर, यस सर, और कुछ नहीं है, यस सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। है ना? कुछ नहीं। तो एनीवे आप बताओ, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस हो बताओ, मगर बहुत ज्यादा डायरेक्ट आउट मत करो। और ये सब 5 और 6 मिनट्स का गेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कुछ अगर जैसे कुछ और बताओ, ताकि आई कैन टॉक इन दैट फॉर्म। कुछ और हो तो वे आई कैन से समथिंग। सर आप इतने एक्सपर्ट हैं सीआरआई गाइडलाइंस से, तो थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर देते हैं सीआरआई के ठीक बारे है, में। ठीक है। अभी अभी लेटेस्ट ही मेरा 2 दिन पहले ही मैंने एक सीआरआई पे ही ग्रांट लिया है, पेटेंट which was very difficult. We got the grant on it. See, you can go through all the examples that they have given, or you can understand one small thing, that the invention, our thought process has evolved so very much now, US का भी, यूरोप का भी, इंडिया का भी, that we are not blanket ban किसी पर भी, किसी भी टेक्नोलॉजी पे नहीं है, राइट? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या कॉम्बिनेशन है। अर्लियर दे यूज्ड टू से इट हैज टू बी अ नोवेल हार्डवेयर, बट देन वो सोच ही कितनी लिमिटेड है कि हर दिन नया हार्डवेयर कैसे बन सकता है यार? नहीं ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम करके ही एक नया सोल्यूशन निकाल सकता है। तो अभी जो एक लाइन का जो मंत्र हम जो यूज करते हैं वो ये करते हैं, क्या इन्वेंशंस का फोकस है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट? अब मैं टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बायोटेक के अंदर टेक्निकल, बायोटेक में तो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, मगर फार्मेसी में टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है, राइट? एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक साइंटिफिक सोल्यूशन होना चाहिए, राइट? वो मैथमेटिक्स लगा दो, फिजिक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे लगना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं न्यूटन्स का लॉ ही क्लेम कर रहा हूँ। उसको यूज करके अगर आप कुछ कर रहे हो, एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, तो टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम, मेरा वन लाइन का मंत्रा यही है। बाकी वो भले ही 50 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बना दिए हो, तो वो क्या बोलता है कि पहली बात तो सोचो कि इन्वेंशन कर क्या रहा है, राइट? इन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, वो भी एक ग्रांट हुआ, इससे बता रहा हूँ कि हमारा एक क्लाइंट है जो कि पेमेंट बेस्ड कुछ तो प्रोसेस लेकर आया था। दे केम अप विद अ सॉल्यूशन टू enhance the speed at which payment is processed, at the same time to reduce the rejection rate. अब देखा जाए तो सीधा सीधा बिजनेस प्रोसेस है, मतलब मेथड ऑफ पेमेंट है ना फाइनली। तो अगर किसी किसी और को लिखना होता तो मेथड ऑफ पेमेंट लिखता और खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया होता पहले दिन ही, राइट? बट द वे यू नीड टू, इसमें आप देखो तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री के अंदर पेमेंट आज भी हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर पेमेंट आज भी रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम। और वो क्यों है? नेटवर्क इशू के चक्कर में नहीं है, वो है कुछ तो मतलब बिट में ऊपर नीचे होता है, इसके चक्कर में है। तो वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन जिसके की बेस पे हम इस बिट को एड्रेस कर सकते हैं ऑन द फ्लाई, सो दैट रिजेक्ट ना हो, क्योंकि रिजेक्ट होगा तो क्लाइंट जो है वो दुखी हो जाता है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम इज हाउ टू इम्प्रूव दिस द पासिंग रेट। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी पे क्लेम लिखा, उस टेक्नोलॉजी पे पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा, और उसका पेमेंट प्रोसेस तो ऑफकोर्स फाइनली ऑब्जेक्टिव तो वही था। तो हमारे ये 3 स्टेप ही वो बोला कि ये पेमेंट प्रोसेस कर रहे हो आप, मगर हमने कहा हम पेमेंट प्रोसेस को क्लेम नहीं कर रहे, हम इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं। तो हमने क्योंकि पेमेंट प्रोसेस नहीं बोला, हमने बोला पेमेंट प्रोसेस के अंदर ये प्रॉब्लम है जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए है, और वो इंडस्ट्री के लिए है, दिखाया उसको इंडस्ट्री के लिए है, सोल्यूशन भी इंडस्ट्री का था, तो ग्रांट हो गया। यूएस इंडिया दोनों में ग्रांट। तो करना क्या है आपको, कभी भी कोई बोले तो देयर हैज टू बी अ टेक्निकल प्रॉब्लम which an invention is aimed to solve, and if it is solving it, there is a solution to it. अब वो solution simple है, technical problem simple है, I don't care. If there is a technical problem, if there is a technical solution, there has to be grant to it. Invention is not about a rocket all the time. Invention is about solution to a problem which nobody has solved. That's about it. Now वो solution जो है वो technical होना चाहिए, और जो problem जो है वो technical होना चाहिए। अब आपके बायो में, फार्मा के अंदर, बायोटेक के अंदर क्या भाषा यूज होती है, आप लोग सोचो, राइट? क्योंकि सी मैं नहीं बोलना चाहूंगा जो जिसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है? तो वो एक चीज ध्यान रखिए। तो ये सीआरआई गाइडलाइंस का जयवीर मोटा मोटा है, बट थैंक यू फॉर सेइंग दैट। अब इसमें एक काम आप कर सकते हो, क्योंकि फाइनली इट्स एन एकेडमिक सेटअप, राइट? तो आप ये करना, जो स्टेप्स उन्होंने दिए हैं इस बार, राइट, फॉरगेट अबाउट द 20-50 पेज है, वो जो 3 स्टेप है, द एग्जामिनेशन स्टेप, जो 3 स्टेप है, उन 3 स्टेप को एक बार पढ़ लेना।
कि स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, और वहां जाके रट के नहीं बोलना है। बोलना इस तरह से ही है कि द द एग्जामिनेशन प्रोसेस हैज इवॉल्व। नाउ द एग्जामिनर्स आर सपोज्ड टू सी द इन्वेंशन होलिस्टिकली। they are they are supposed to see the objective of the invention. They are supposed to see the core problem of the invention and core solution of the invention. Therefore they have come up with a framework which is divided into steps. That's it. ठीक है, उस तरह से बात करने की बात है। और सिमिलरली अब जैसे वो बोल सकते हैं कि फॉर्म 3 के अंदर जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट, earlier every 6 months you had to file your form 3 updates. Now it's only based on the controllers. First is yours, then of course controllers. कि जब controller मांगेगा, तो what is your view on it? Why this was required to be done? तो आता है तो बोलो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। आपके थॉट प्रोसेस है कुछ? एनीबॉडी थॉट प्रोसेस है? अदरवाइज वन वे स्ट्रीट है। सर वो बार बार, एक तो हमारा ही इन्वेंशन हम फाइल कर रहे हैं, बार बार ऊपर से इंफॉर्मेशन देना, वहां पर भी प्रोसेस चल रही है और प्रोसेस बार बार अपडेट होती रहती है। वहां पर भी तो कितनी बार उसकी डेडलाइन से कितनी बार यहाँ पर सबमिशन देना, और एक भी टाइमलाइन अगर चुक गई तो डायरेक्ट ऑब्जेक्शंस, वही 25(1)H एंड 25(2)H का। तो उस नहीं नहीं, सो गुड, वेरी वेरी गुड आंसर फॉर दैट। सो सिमिलरली, सो बेसिकली सी, इसको भी आप गवर्नमेंट से के द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट इट्स थिंग्स, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, उससे जोड़ सकते हो। तो कंप्लायंस जितने इजी टू अडहेयर होते हैं उतने कंप्लायंस होते हैं, राइट। कंप्लायंस को आप अगर बहुत पेचीदा बना देते हो तो पीपल इधर लूज आउट ऑन कंप्लायंस और पीपल इवेड कंप्लायंसेस। So ease of doing business. So we are following the principle of our government which says ease of doing business. So ease of maintaining your patents. And because everything is digitalized now, information is already available through the applicant's name, through the inventor's name, and patent office already has access to all the internet available database. And within the patent office, they have highways, right? So because they have the information, they are not losing out on any information. So this was an unnecessary compliance on part of the applicant, which patent office has taken a great step of doing away with, right? अब ये एक हो गया। अब एक और हो सकता है जैसे अपना फॉर्म 27 है, विच इज अबाउट, पहली बात तो पूछ सकते हैं, अच्छा फॉर्म 27 की क्या जरूरत है? हमने पेटेंट फाइल कर दिया, हमें पेटेंट ग्रांट हो गया, हमने पेटेंट की मेंटेनेंस फी भी भर रहे हैं, फॉर्म 27 की क्या जरूरत है भाई? मेरा इन्वेंशन है, क्यों प्रदीप जरूरत है सर, फॉर्म 27? वाई फॉर्म 27 सर? सो अब ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स अ two-way street where we give you the grant, you give us the invention, right? So you have already given us the invention by making the invention available to the public. But we also want that ये जो आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया है, वो एक्सक्लूसिव राइट इंपोर्ट करने के लिए नहीं दिया है। एक्सक्लूसिव राइट आपको यहाँ पर वर्किंग के लिए दिया है। अब वर्किंग से क्या मतलब है यार? इन्वेंशन तो अवेलेबल है ना पब्लिक में, वर्किंग से मतलब ये है कि थोड़ा इकोनॉमी को फायदा होता है, थोड़ा लेबर क्रिएट हो जाती है, थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट? इसलिए वर्किंग करनी है। अब वर्किंग कैसे कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा? तो सीधा सीधा फॉर्म 27 आ गया, एटलीस्ट यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब कॉलकॉम जैसी कंपनी जो कि 3000 एप्लीकेशन फाइल करती है इंडिया के अंदर, 3000 एप्लीकेशन मेंटेन करती है इंडिया के अंदर, 3000 फॉर्म फाइल करना बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए उनको एक सेटअप बिठाना पड़ता है बहुत बड़ा, कैसे करोगे? तो इसलिए उन्होंने इवॉल्व किया कि चलो ठीक है यार, जो all the patents which can be considered as related to the same product can be filed in one form 27. ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। अब सेकेंड अमेंडमेंट वो भी मगर हर साल करना पड़ रहा था ना। अब सेकेंड अमेंडमेंट ये था कि चलो ठीक है, अब वंस इन 3 इयर्स कर दो। अब क्या होगा, कोई वहां पर मैथमेटिशियन बैठा होगा, वो पूछेगा चलो वंस इन 3 इयर्स तुम बोल ही रहे हो ना, अब बताओ मेरा पेटेंट अगर FY25 में ग्रांट हुआ है तो फर्स्ट टाइम मुझे कब फाइल करना पड़ेगा? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ गिनूं कैसे गिनूं। अब यही है, तो +3 करते रहो, तो ये क्वेश्चन ऐसे बिल्ड होते जाएंगे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मगर +3 होगा क्योंकि 25 में ग्रांट हुआ है, तो 26, 27, 27, 28 सितंबर में कर दूंगा। हाँ चलो 29 में क्यों नहीं? नहीं सर 28 सितंबर, 29 में क्यों नहीं? सर ठीक है 29 में कर लेंगे। तो ये इट्स ऑल अबाउट प्रूविंग हिम राइट, प्रूविंग योरसेल्फ राइट, राइट। बट देन अगर आपने 3 इयर्स बोल दिया है ना, तो योर मार्क्स आर ऑलरेडी गिवन देयर।
उसके बाद केवल और केवल मजाक मस्ती चल रही है, आपके मामा या मेरे मामा वाला हिसाब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, राइट? सॉरी, ये थोड़ा क्रूड एग्जांपल है, मगर मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है? तो ये इस तरह की बात हो गई। और सी, ये सारी चीजें क्या है, ये डे टू डे इंटरेक्शन वाली बात है, जो कि काम आती है बहुत। एवरी मार्च, एवरी सितंबर somebody would come and say that मेरा फॉर्म 2757, फॉर्म एवरी 6 months somebody will say come and say फॉर्म 357, राइट? ये चीजें रेगुलर है, तभी पेटेंट एजेंट का काम आता है। तो प्रदीप, इट्स नॉट अबाउट इनेबलिंग और बीइंग द ब्रिज। आप फॉर्म 3 भी फाइल कर रहे हो, आप फॉर्म 27 भी फाइल कर रहे हो, आप मोनिका को उसका राइट भी दिला रहे हो, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट अ पेटेंट एजेंट कैन डू डे टू डे। आज अगर मैं सवेरे उठता हूँ तो मेरे को किसकी ईमेल आई हुई और क्यों आई हुई है, क्या उसका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं, राइट? अभी और ये सारी चीजें होती हैं। और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के पूछ सकता है कि यार, ये तो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है। एक इन्वेंशन लेके आ गया कोई, माउस। अब इस माउस के अंदर, सॉरी अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, माउस लेके आ गया। अब पूछेंगे अच्छा इसमें कौन कौन से आईपी है, ये भी तो पेटेंट एजेंट का रोल है ना। अब ये तुम्हारा ब्रिज है, नाउ यू बिकमिंग द ब्रिज, नाउ यू बिकमिंग द एनेबलर। तो अभी आप केवल भूल जाओ कि यार इसमें क्या क्या है, तो फिर यार थोड़ी गलती हो गई ना। इतना नॉलेज तो रखना पड़ेगा, इसके लिए वाइवा वाइवा के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता इसके लिए, है ना? तो इसमें क्या क्या है पता है, अच्छा क्या डिजाइन कर रहे हो, यूटिलिटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब देख रहे हो। बोलो, बस बोलो, चुप नहीं रहने का, बोलने का। और जहां नहीं आता वहां नहीं बोलने का, बिना मतलब का नहीं बोलना। जो बिल्कुल ही आपके स्कोप के बाहर है, जो जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे उन्होंने कुछ तो बायोटेक का कुछ तो क्वेश्चन पूछ दिया था, मैंने बोला मुझे आता ही नहीं है, और ना मुझे बायोटेक के क्लाइंट्स को हैंडल करना है, क्योंकि मैं जस्टिस ही नहीं करूंगा ना। आई विल रेफर इट टू वन ऑफ माय बायो फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू डू इट। और उसके लिए मार्क्स कटे तो कटे यार, मैं क्यों बिना मतलब का क्यों बोलूं यार। अब ये मेरा वे है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स एंड फिजिक्स, आई एम प्राउड ऑफ माई मैथ्स एंड फिजिक्स। बट लास्ट टाइम एक वो वाला क्वेश्चन आया था ना, सेट्स वाला, एक सेट वाला था। और मैंने जयवीर को भी बोला था कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा भी नहीं कभी लाइफ में, क्यों करना है मुझे यार। अब तुम सेट थ्योरी पूछ प्रोटेस्ट। रहे हो। हाँ, प्रोटेस्ट मोड, मुझे करने का ही नहीं क्वेश्चन। अभी कल को वो सॉफ्टवेयर कोड लिखेगा जावा का, और उसमें कुछ लिखेगा इनपुट आउटपुट, तुम कहाँ जवाब दोगे कि इसका प्रिंट क्या होगा। हाँ, प्रिंट स्क्रीन में क्या लिखेगा हमें क्या पता यार, हमें नहीं पता। तो पेटेंट एक्ट को पेटेंट एक्ट ही रहने दो यार, डोंट मेक इट ब्लॉक थ्योरी, दिस थ्योरी, दैट थ्योरी, राइट? बट ठीक है यार, एवरीबॉडी हैज देयर वे टू डू इट। और क्या बात कर सकते हैं बताओ। This is और मतलब exactly what you always say, demystifying the act rules and everything. This is exactly what the process ongoing. So fantastic. This is really nice. so yeah, Sarang and I go a long way. So very good guy. Sarang is a gem of a guy. I love him. Thank Actually, you, sir. Thank always you. always a great interaction with him. Thank तो you. तो क्या था, और क्या बोल सकते, सिर्फ अदरवाइज क्या हो सकता है, कुछ ओपिनियन की बात हो सकती है, राइट? जैसे मेरे केस में सॉफ्टवेयर की ओपिनियन थी। नाउ तो बिकॉज दिस गाइस हैव ऑलरेडी कम अप विद सीआरआई गाइडलाइंस, राइट? तो ठीक है, सर वो ओपिनियन भी नहीं रह गई, वो तो फ्रेमवर्क आ चुका है, उसमें क्या ओपिनियन है। अभी आप सोचो कि इसमें सर हाँ, somebody, another topic has been evolved, Shanti will. Any शांति, point of या view या from your यस side? यस यस यस, दैट्स अ वेरी गुड वन। हाँ, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, गुड रजत। सो उसमें क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि यार हमारा सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का क्या करना है भाई, अब तो है ही नहीं। तो अभी कोई बोल सकता है कि शांति जैसे ही आएगा तो पहले तो उसका फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, शांति के नाम से तो वो नहीं छोड़ने वाले, शांति फुल फॉर्म पूछ ही लेंगे, तो याद रख लेना। और वो हो जाता है, उसके बाद जितना पता, मतलब सी, 4-5 जो उसके एक्सेप्शंस है, मतलब द एक्टिविटीज विच आर काइंड ऑफ आर अलाउड टू बी पेटेंटेड, वो याद रख लेना। मतलब सी, मुझे याद वर्ड अच्छा नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट्स अ नॉलेज नाउ, कि अगर आपके पास कोई इन्वेंटर आता है जो कि एक्चुअली इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो यू डोंट टेल हिम दैट बॉस आपका एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो हम आपको फाइल नहीं कर सकते पेटेंट। हम बोलेंगे कि आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हो, कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद। तो आप यूज करो। जब आप, जैसे क्वेश्चन आता है एज रजत वाज सेइंग, अगर ये क्वेश्चन आता है तो वी टेल देम that no, we are not blank, there is no blanket ban on atomic energy kind of inventions. We will understand from the client what problem statement are they solving, what domain are they working in, and what solution are they proposing. ठीक है? इस तरह से 3 भाग में आप आंसर दो,
good enough. It's not going to go beyond 2 minutes or 3 minutes on that because बहुत restricted time है और बहुत लोग काम करते हैं उसमें. और क्या है बताओ? शांति एक्ट हो गया है. सर अब अभी अभी शायद एडवोकेसी को भी पकड़िए ना प्लीज. Sir, misconduct by patent agent. अरे मिसकंडक्ट बाय पेटेंट. तो I जो think that has पेटेंट to be the most hottest topic. मतलब मिसकंडक्ट क्या That's a है मुझे direct. नहीं. नहीं देखो अभी जो सी आई टेल यू. अभी जो सर्कुलर आया था पेटेंट ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, राइट? तो जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सी पीपल टुक इट इन डिफरेंट मैनर कि file your trademark, get your trademark done. So first of all, advocates are not, all these services are not allowed to be advocated, allowed to be advertised. And you cannot, I don't know whether जो भी companies के नाम थे, were they putting out themselves as offices or were they putting themselves out as only service providers? If they were service providers, तो advertisement तो नहीं करना चाहिए था. But if they were putting themselves as offices, then गलत था. अब उसके लिए हमारे पास जो sections आ गए हैं, उसके लिए हमारे पास जो forms आ चुके हैं, right? तो is there a way to kind of अगर किसी का misconduct है, तो is there a way to kind of complain against them, right? तो वो चीज है. बाकी ये क्योंकि जो पेटेंट एजेंट मुझे क्या लगता है, दिस आस्किंग योरसेल्फ कि अच्छा हाँ, उसको मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि मिसकंडक्ट है. आपको पूछूंगा अच्छा आप what is the ethical conduct on your base? If you become a professional, what you should do and what you shouldn't do is what something you should know. But अगर पेटेंट एजेंट हो तो पेटेंट एजेंट हो यार, अगर नहीं हो तो डोंट साइन एंड डोंट portray yourself as patent agent. That's about it. Patent profession. अच्छा, somebody was asking about advocacy. See, I don't know आपको कहाँ से मिला है ये information के पेटेंट मतलब पेटेंट ऑफिस doesn't like advocates. I don't know. मेरे colleagues advocates हैं and they appear for all the examination hearings and all that, and they get treated the way they get treated basically as a professional, right? Here and there I don't know कुछ bad experiences हुए हैं कि नहीं हुए हैं. But एक चीज है, advocates are, of course, they know their law, they know their rights. So these are the guys who talk law, and examiners don't talk law. हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हम पेटेंट एजेंट जब बन जाते हैं तो हम लॉ की बात नहीं करते. हम जब एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो हम लॉ की बात नहीं करते. लॉ की बात कोर्ट्स में होती है. हम यहाँ पर केवल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. हम यहाँ पर केवल इन्वेंटिव और ऑब्वियसनेस की बात करते हैं. हम लॉ डिस्कस नहीं करते. अगर आप बोलो सीआरआई गाइडलाइंस डिस्कस करने के लिए इन एग्जामिनेशन, कोई नहीं करता. मैं तो कई बार गाइडलाइंस खोल के बैठ जाता हूं. नहीं इस तरह से टू बी यूज. हाँ सॉरी सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. नहीं, what I was what my intent was that, see, when you're putting an intro forward, right, generally what Yeah. happens is like, see, to be frank with you, why I have picked up patent agent exam is because I'm typically like currently I'm into IP litigation. I go for that, and I go for divorce and criminal. So these are the three areas those are the file that I entertain. Now, what happens is like whenever I have gone for the IP litigation, generally it is for infringement or seizure. These are the only things that comes to the court, right? My whole intention was that when I am arguing with the judges, I should be very clear what the act first offer to the table, and then it becomes very easy. See, I don't care how an applicant has filed an application, how exactly he got the grant, right? My concern is not that area. When he comes to me that okay, there is a revocation put on to my patent, my area of expertise comes there. So initially I picked up this to understand like, okay, क्या ऐसा अनोखा है इस act में which will help me in the courtroom. But then gradually over 2 years period of time when I started reading the act, I thought like, okay, I don't want to get into litigation. I prefer for something else. Like either I'll go for teaching or I will go for my own firm. तो अभी इतने सारे पैरामीटर के साथ अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट लॉ, तो मैं वहां इम्पोज करने से रही. बट देन द कंफ्यूजन स्टार्ट कि फिर देन हाउ आई शुड बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ देयर, लाइक व्हेन आई एंड माई कॉन्वर्सेशन ऑफ अ 2 लाइनर इंट्रोडक्शन, कहाँ छोड़ू मैं ताकि वहां से क्वेश्चंस बने फिर. नहीं तो बेसिकली सी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आने वाला है वो तो ये आने वाला है, जैसे आप बोलते हैं कि यू आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, राइट? नाउ एज सून एज यू सेड दैट, and then why do you want to become a patent agent is the question that comes to you, right? Now,
in India, advocates are allowed to sign on papers. So you don't need to be a patent agent. वो वो आर्ग्यू हुआ था पहले, बट आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम नॉट अपडेटेड, प्लीज करेक्ट मी ऑन दैट. बट देन सर देयर इज, जस्ट टू ऐड, वो 2005 के बाद बंद हो गया है सब वो. नहीं सो यार, वो आफ्टर, चेक करना, आप वापस नहीं चेक सर, करना. चेक कर लिया था, लास्ट ईयर चेक किया था हमने. आफ्टर 2005 इट इज क्लोज्ड. अभी एडवोकेट्स को पेटेंट एजेंट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है फॉर साइनिंग. यार मुझे, मैं ओनली ओनली आदि एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन एक्सेप्शन, is hearing. You can get हाँ, attend a hearing. या That's all. या हियरिंग तो आप अटेंड कर सकते हो, यस. हाँ, so तो उसके अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन करना है अगर आपको एग्जामिनर या कंट्रोलर सामने, यू हैव टू हैव अ पेटेंट एजेंट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर. ये आप कंफर्म है, बिल्कुल 100% कंफर्म बिल्कुल सर, आदि? 100%. जी जी सर, 100%. मैं थैंक आपको एफईआर भी भेज दूंगा सर उसका. पेटेंट ऑफिस से बाकायदा ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि भाई आप तो फर्म है, लॉ फर्म है, आप एडवोकेट है, तो आप अपना आपका पेटेंट एजेंट कहाँ पर है, ऐसा लिखा हुआ आता है. और वो ओके. जीपीए मांगते हैं, रिवाइज जीपीए वापस. नहीं नहीं, जीपीए मांगना इज अनदर स्टफ, सर राइट? मैं जीपीए आपको मांगना, एक एग्जांपल और देता हूँ. अभी क्या है हाँ कि इफ यू वांट टू ऐड योर नेम एज अ पेटेंट एजेंट और वांट टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट, हाँ, it means you have to file a new form 16. या Then जो प्रोसेस है उसमें पेटेंट नंबर ही मांगा जाता है फॉर एडिंग. सो देयर या इज नो अदर मींस. So if you don't have the number, patent office will not allow you to file a new form 16 or form 26, sorry. फॉर्म uh, 26, नहीं, इट्स हाँ, ओके. तो वो सर वो 2005 के पहले था वो, और 2005 के नहीं, बाद चेंज हुआ है. 2005 तो बहुत पुरानी बात होगी यार. मैं हाँ सर, वो उसके सब बाद ही मुझे, चेंज हुआ. नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, बट पता नहीं यार, आई डोंट नो, आई ऑलवेज थॉट दैट देयर इज सर ऑलवेज अ ग्रे ये एरिया, बट बिकॉज़ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वी हैव लास्ट ईयर हमने थोड़ा सा इस पे डिबेट भी किया था लिंक्डइन पे हाँ एंड एवरीवेयर, बिकॉज हाँ एडवोकेट्स आर probably creating a lobby that we are allowed to present the case and you should come to us and we should handle the cases in front of parent office, and that has been constant lobbying thing, but as per act, as per rules, it's not allowed. okay, good to know that. Good to, so basically in that Sir, case, Adi, you have already provided solution to Jyoti, was that you? जी सर, yes. दैट्स मी. नहीं, Yeah, so मुझे मुझे आई एम नॉट, माय इंटेंशन इज नॉट टू प्रेजेंट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू नो. no. Yeah, so that's why. So basically, what Adi says is, sorry, my information was not updated because मुझे क्या करना, मेरी ड्यूटी, मेरी नौकरी चल रही है मेरे पेटेंट एजेंट एग्जाम से, राइट? सो मेरे पेटेंट एजेंट सर्टिफिकेट से, और मेरे पास लॉयर्स हैं बहुत सारे जो अपना अपना काम करते हैं, राइट? Sir, तो just a second, let me जी finish जी, that. please sir, please. Sorry, huh? No So, sir, please. so Jyoti, तो basically, you can introduce the way you want to introduce. जो भी आपने किया है वो करिए. And now, because there is this precedent that you cannot, आपको represent करना है नहीं करना है वो forget about it. But then let's say if you want to have your own practice of being a patent agent, assisting applicants, technical folks to file patent application, you need to have a patent agent number to it. Hence, I am appearing for patent agent examination. खत्म हो गई बात. एकदम एकदम properly framed response है, properly framed objective है, and there is no nuances about it. There is no other nuances about it. तो आप तो बोलिए जो आप जो कर रहे हैं, आप ये सब मत बोलिए कि आप लिटिगेशन करती हैं, वो सब करती हूँ. आप एडवोकेट हैं, अपना बैकग्राउंड पूरा बताइए आप क्या करते हैं. एंड देन आप क्या करना चाहते हैं इज योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. फॉर दैट ऑब्जेक्टिव यू नीड टू बी अ पेटेंट एजेंट. सिंपल सी बात है. Sure, sir. Thank you. Much appreciated. I need to work now. Yeah. No, okay. Somebody was saying something. Rajat, you wanted to say something? Sir, regarding that advocate part, because Uh-huh. what I observed, being an advocate, you can help someone to file or help him to attend hearing. But being an advocate, you cannot sign in down the claims or the description, the Okay, drafting part. okay, For okay. that, you have to be patent agent. That means Sure. you have the technical and legal knowledge to draft that techno-legal document completely. So, Perfect. Sorry. Thank you. This is a news for me. I always thought that, as somebody was saying, the lobby of advocates, right? So बट सर कहीं ना कहीं आप भी सही है, वो ऐसा क्लियर कट कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है. तो इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना क्लियरली वो आंसर भी होना चाहिए ना. आप जो बोल रहे नहीं, हैं उसमें भी मैंने फैक्ट है. आई नेवर एक्चुअली वेंट टू फाइंड एन आंसर फॉर इट, क्योंकि मैं कभी इस प्रॉब्लम में फंसा ही नहीं, इसलिए. तो एंड इफ एडवोकेट्स आर नॉट एबल टू साइन इट, गुड फॉर मी, आई विल साइन ऑन देयर बिहाफ, राइट? सो वो था. तो ये अच्छा, तो हम कहाँ थे यार, मैं भूल गया. हम कहीं तो थे. सर हम शांति आई बिल, थिंक आई थिंक that शांति शांति was बिल बिल. तो अपना, हाँ, concluded हो गया. शांति इज टॉक्ड अबाउट.
We had talked about Shanti, we talked एडवोकेसी about advocacy, we talked about, हाँ and then अब design, see, design, there is nothing है, design सबसे simple है, अभी डिजाइन कुछ का तो तो नहीं, अभी अमेंडमेंट सर आया ना 23 जनवरी वो ठीक है, सर amendment बहुत simple, एक बहुत एक simple सा कॉमन amendment क्वेश्चन, है। सर कॉमन क्वेश्चन का लास्ट टाइम दिल्ली में था, वो था सेक्शन 10 का। हम्म हाउ, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर टेस्ट सेक्शन 10, उस पर वो काफी तो यार क्वेश्चन अब पूछेगा। वो तो सब आप लोग पढ़ के बैठ के हो ना, आप तो पेपर 2 भी तो दे चुके हो, अब सेक्शन 10 का तो पता होना चाहिए ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन सब सेक्शन 10 ही था उस सबके लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी ठीक चीजें है हैं। वो, यार बायोडाइवर्सिटी बहुत एक्ट, नेशनल, दिस, आईपी, आईपीडी, ऑल दोस थिंग्स आर डिस्कस्ड इन आईपीडी, सेक्शन 10। आईपीडी सेक्शन 10 के अंदर नहीं आएगा, बट नहीं नहीं, ठीक वो है। जो आपका हाँ, बायोडाइवर्सिटी क्या आईडी होता है, आईडी है आईडी, हाँ इंटरनेशनल आईडी, डिपॉजिटरी हाँ अथॉरिटी राइट, इंटरनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, राइट। माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चरल सेंटर ठीक है, सेक्शन 10 में मुझे तो अगर हमें ही अगर कोई बोलता है कि हाँ आई विल हेल्प, जैसे अगर मान लो इफ somebody starts and Rajat says that I want to, Rajat और प्रदीप says that I want to start helping somebody to draft a patent, right? अब जैसे आपने ड्राफ्ट बोल दिया तो सेक्शन 10 तो सीधा सीधा खड़ा हो गया ना, तो सीधा सेक्शन 10 हो गया, तो चल भैया तुम ड्राफ्ट ही करना तो पहले सेक्शन 10 के बारे में बात कर लेते, राइट? अब वो सेक्शन 10 के बारे में वापस से बात करते करते 10.4, 10.5, एब्स्ट्रैक्ट कितना लंबा होगा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं जाएगा, ड्राइंग्स किस तरह से होनी चाहिए आपकी, अच्छा ड्राइंग्स नहीं होगी तो क्या करोगे, राइट? और क्या ड्राइंग्स होनी जरूरी है, क्या ड्राइंग्स होने का फायदा क्या होता है, और बेस्ट मोड क्या होता है, राइट? अब बेस्ट मोड क्या होता है किसी को नहीं पता, व्हाट इज बेस्ट मोड, राइट? बेस्ट मोड उस दिन मेरे को जो सबसे अच्छा लगा वो बेस्ट मोड है, राइट? उसके 7 दिन बाद मैंने इन्वेंशन को और रिफाइन कर दिया, वो बेस्ट मोड हो गया, बट आई कैन नॉट पुट दैट बेस्ट मोड बैक ना। So on that particular day of filing, what was the best mode of practicing the invention as per me is best mode, right? तो ये अपना हो गया बेस्ट। तो 10 तो आप एक बार रिवाइज कर लेना है, आदि अगर बता रहे हैं कि भैया हॉट क्वेश्चन है तो हॉट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना, मगर प्रिपेयर नहीं करना है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आप लोग के अगर मार्क्स पॉजिटिव आ चुके हैं तो प्रिपेयर है, और मैं सबको ये बोलता हूँ कि पेपर 1 के अंदर 80-90 लेकर आओ, पेपर 2 के अंदर 50-60 लेके आओ, और उसके बाद एकदम जाके बैठो आराम से कि हाँ चलिए सब बात करते हैं, राइट? क्या बात करनी है, क्योंकि आपको 10-15 नंबर तो देंगे नहीं वो, ठीक सर है? सर आपकी वो हाईएस्ट क्या स्कोर है सर मैथ में, पेपर 1 का? आई आई डोंट नो भाई, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता, सॉरी। जयवीर सर, आपको पता है सर? कहाँ पर सर लास्ट ईयर सर दिस ईयर नहीं सर, इस ईयर, दिस ईयर व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर फॉर पेपर 1? सर अभी आने तो दीजिए, पेपर 1 का स्कोर भी नहीं आया अभी किसी का अपना यहाँ पर हाँ अपने सर ग्रुप में। अपना, हाँ सर अपने प्रदीप पाल सर 83 84 प्रदीप पाल सर। ग्रेट। तो प्रदीप अगर आपके 50 आ जाते सर हैं, 86। 86 सर, सॉरी माय माय मिस्टेक। तो प्रदीप थोड़ी मैथ्स बनाओ, और अगर आपके 50 आ जाते हैं, सॉरी बोल रहा हूँ आ जाते हैं, क्योंकि कोई आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो उनके हाथ में, अगर आपको 50 दे देते हैं तो 86 + 50 136 तो ऐसे ही हो गया, राइट? सर अभी यस पेपर सर। 2 के तो ऐड करना ही बाकी हो। नहीं नहीं, तो 86 + 50 एंड थे ना, 80 हाँ, 50 136, राइट? तो वहां जाके उनसे आप बात कर सकते हो आराम से, राइट? यू डोंट नीड टू बी अंडर एनी स्ट्रेस। अगर आप मतलब इतने स्ट्रेस में आ चुके हो कि आप 10 मार्क भी लेकर नहीं आ रहे हो, तो आप पेटेंट एजेंट बन भी नहीं सकते, राइट? आप जाके बस यू हैव टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन देयर, राइट? एंड वही करना है, एंड विद कॉन्फिडेंस। आपके 14 मार्क्स चाहिए आपको यार, राइट? और वो चाहिए नहीं, वो या मिलते हैं, वो मिलते हैं, राइट? देयर आर पीपल हु गेट 48 45 50 भी मिलते हैं लोगों को, राइट? मिलते हैं लोगों को, कैसे मिलते हैं वो जाने, और किसी को 25 भी मिलते हैं, 28 भी मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो वहां जाके बात करिए, एंड अगर आप लोग सब 140 मतलब 120 125 130, अगर कोई बिल्कुल ही 110 पे आ जाता है, राइट? तो वो 40 मार्क्स, क्योंकि सी यू मे डू योर बेस्ट बट देन दोज गाइज विल गिव एज पर देयर इंटरप्रिटेशन, राइट? तो वो मुश्किल हो जाता है, बट 30 प्लस इज गुड, इज इजी टू स्कोर, इन द सेंस यू जस्ट हैव टू गो टॉक प्रेजेंट। और नए सिरे से कुछ भी चालू नहीं करना है, तो अगर जयवीर बोलता है कि नए सिरे से वापस से क्लासेस लगेंगी तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी जयवीर। तो, तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड सर आप मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बोलो आप यार, बोलो प्लीज। मैं तो एक बहुत, देखिए सर मेरी वेट है 108 केजी, तो थोड़ा सा मुझे वो कम करना है आपकी तरह, डेली बेसिस पे सुबह सुबह थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब हमारे यहाँ एक रजत सर है सर, ही इज अ वेरी यंग गाय, आपने देखे भी होंगे उनको, या अब लिंक्डइन पे भी आपको भी फॉलो करते हैं, और ही इज अ कैंडिडेट फ्रॉम 2023 बैच, फिर ओके, उन्होंने क्लियर किया
सर मेरा काम तो सर इतना है कि बस मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सभी लोग पोटेंशियली एक्टिव रहे चीजों में, दैट्स इट। तो वो माहौल बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना। बट सर या पूरा एग्जीक्यूशन जो ये पढ़ाया है, ये ग्रुप में जितना भी हुआ है, ये रजत सर पढ़ा रहे हैं, ये इतनी प्रिपरेशन। और वो सर खुद सर उनको भी AIR 4 है सर, वो ऑल इंडिया रैंक 4 है 2024 के पेपर में। और awesome. उन्हीं का ही मेहनत है ये सारी चीज। मेरा तो काम बस इतना है कि रजत सर बोलो कौन एक्टिव नहीं है, ताकि मैं उनसे बात करूं और वो लोग लाइन पे आ जाए, दैट्स इट, Very नथिंग good. एल्स। ना ही बहुत सर बढ़िया। मुझे चीजें ज्यादा आती है और ना ही मैं उसको ज्यादा एग्जीक्यूट हूँ। Right. मैं हर एक चीज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं उसको सुनना चाहता हूँ रजत सर को, ताकि मुझे नॉलेज बढ़े। आई एम नॉट गुड एट नॉलेज, आई एम गुड एट बिजनेस, सो आई एम डूइंग सो। नॉट सर सर ऑन अ जोकिंग पार्ट, इतना नहीं नहीं है कुछ सर, नहीं। मेरे में भी बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं है, एक छोटी सी सेवा है। और आपके जैसे लोग जब मिलते हैं सर, ताकि ताकि ये सारी चीजें चल सकती है। मैं सर एक बार रजत सर से कहना चाहूंगा, वो भी आपसे बात करना चाहते थे। सर रजत सर, व्हाट इज बिल्कुल। योर रोल एज बीइंग एन पेटेंट एजेंट? वो आप आंसर दीजिएगा सर को। सर उससे पहले बस एक चीज बोलना चाहूंगा, चंद्रगुप्त से ज्यादा महत्व चाणक्य का था। तो हम अगर चाणक्य। अगर आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो वो आपके कारण है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई रोल नहीं है या आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस बीइंग अ पेटेंट एजेंट हमारा काम है सर, एक इन्वेंशन को अंडरस्टैंड करना और सामने वाले को हेल्प करना, उसके राइट्स उसको दिलवाने में। मैं इतना समझता हूँ सर। बाकी बड़ी जैसा कि सर ने बढ़िया कहा। है। हाँ नहीं तो हाँ, तो गुड है वो। मैं इसको एज अ पूरा लाइफ साइकिल देखता हूँ। मैं आइडिया तो एक केवल एक स्टार्टिंग फेज है, बट देन देर इज अ सोल्यूशन टू द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो देखता हूँ। अच्छा, तो अगर प्रदीप से आप, वी वांटेड टू हैव सम मॉडल वाइवा फॉर प्रदीप आल्सो, राइट? वैसे तो बहुत बात कर चुका हूँ, मगर ठीक है, लेट्स पुट प्रदीप ऑन द स्पॉट। सर यस Pradeep, सर। any बिफोर which way, दैट you just need बिफोर 14 दैट marks. I'm giving you 14 marks. sir, just to interrupt, before that, I think Sangvi ma'am wants to have a question. Okay, यस She okay. सांगवी मैम। Uh, Okay. Good evening, sir. Yeah. Sir, it's my pleasure to interact with you. Sir, I just have one query. I'm into drafting and prosecution, and I'm really involved in both Indian and foreign jurisdictions. And I have got multiple grants in Indian and foreign jurisdictions. So, should I mention this thing there? No, no, no. See, if you have to mention, the way you should mention is this. See, आपको पता है ना ethics क्या है पेटेंट एजेंट के? Yes, sir. Yeah, That we one cannot practice we without. cannot practice. We cannot practice. So ideally, what and if you had joined earlier, so my story was also like this only from 2004 to 2006. As in, till today, I do the same thing only, a much more strategy part and not more on drafting now. But then you are not. But the way you say is you, because you work for somebody, right? You are assisting somebody to get the knowledge, to get the working experience, right? So you have exposure of going through the life cycle of an idea, such as sitting through the invention disclosure discussions, sitting through inventor interviews, sitting through examination document review, and sitting through the strategy preparation of it. So you are an apprentice, or you are what is another term, intern, or you are working as a shadow to somebody, Associate, right? sort of. As a shadow to somebody. You are not a Okay. patent agent. So you have to say, I work as a shadow to a lawyer or any patent agent that you're working with, right? So you Yeah. work as a shadow. You're not supposed to draft on your own. So these are all could be your shadow work. So you should, I would see, Avi, because this is, Javier has recorded this session, so I don't know why I should say that. But then ideally, you are not supposed to work. Ideally, you are not supposed to. Anybody else? And sir, it was really nice talking to you. Sir, I had to leave now. Actually, I have examinations coming up on day Oh, after tomorrow. oh, all the So best. I'm All the leaving. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Rajat. Take care. सर जय and हिंद। sir, एक लाइन बोलूं सर, वो भी रिपीटली want to thanks to all of you. I'd like to say thank you. आगे का मुझे याद नहीं आ रहा बिकॉज
I don't know why, but yeah, a big thanks, vote of thanks Thank you, thank from you, thank you. अच्छा एक्चुअली जब हम लोग लेक्चर पढ़ते थे, जयवीर सर पढ़ाते थे ना सर, तो हमेशा सुनते थे, आपके बारे में भी सुनती थी। तो सी इज टेलिंग अभी भी यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो सर का लेक्चर, आप तो पास कर गए। बोला नहीं सर लाइव है। तो सी जस्ट केम। Perfect. So, Pradeep, maybe you can give a very brief interview, some introduction about you. So, Jayenge, my name is Pradeep Pal. I have a master's in chemical engineering, and parallelly have a work experience around 6 years in technology consultancy, where my role is related to the technology researcher, basically which relates to patent landscape, I can say technology assessment, and my work role includes daily, I can say, interactions with the patent for identification of patent trends and technology positioning. So that drives me to learn about the more patents, and that's how I take inspiration to move forward in this domain to be a patent agent. Acha, Pradeep. So quick. Okay, let's be in this mode only. So Pradeep, you said that you have an overall experience of 6 years in technology as a technology researcher, right? So because you already Yeah. talked about your interaction with the patent trends. So my first question is, what do you mean by patent trends, and how do they help us? So it depends upon which perspective we are looking from a country perspective or from a perspective of a particular company, how their peers are doing. Actually, competitors are filing in which domain, which themes they are actually working on, or which themes they are not working of. That gives the answer of a white space where another competitor can move, or they are still making minor movements that are still not in the patent domain. Might be they are working with some university filing academic research publications. So in the crux, I will say that will answer where my competitors are working, where they are in niche in this domain where I can enter, or either there can be opportunity. They are not filing, just they are executing their inventions on a commercial level directly without protecting the IP, or maybe a trade secret they are keeping in their domain. Great. So I have one issue with what you're doing. So first is, don't you think the data that people get to see on patent is stale data? You understand what is stale data? I can say that is not updated up to the time. Maybe last 3 to 5 years trends, it's not there because sometimes the publications take 18 months. So if I'm doing analysis for the last 10 years, I will already assuming myself from the last, I can say the 18 to 20 months, data will not be there. That will not be accurate. I have to predict that data. I have used this hypothesis like what the last, I can say 2 year trends at what CGR the patent filing is are going up. I will correlate those things. Then I propose the solutions like this much is the growth rate CAGR in this domain. And who are the top 10? And amongst the top 10, who is leading and who is going downwards from their top? If somebody is going downwards, that means they are going to the commercial stage, they have stopped the IP filing. So that's Okay. the way of bringing the See, the trends. reason I talked about stale data was because you talked about white gap analysis, right? White space. Now, if we don't have access to data which is recent, we are playing with the data which is minimum of 18 to 20 months stale, right? We don't have any data from the current year. And in the fast moving technology, the technologies actually flip overnight. So when you are identifying a white space based on the data which is 18 months old, and you ask your client that you can do research and development in this particular white space because you didn't find the data, and there is no way to predict it also, right? So Yeah. do you think you're playing in the blind by asking your client to go and do R&D in this particular area because you thought or because you assumed that there is no data there? You don't need to No, answer I'm that, not Pradeep. thinking we. Pradeep, you don't need to answer that. Nobody's going to ask you that Okay. question, but this is the problem that will happen. Don't say Okay. patent landscape. Don't say patent landscape. Okay. Don't say patent landscape. Because there are so many questions that you will get stuck. And I can play that. So I can say I can start with asking my mama's question right now, and you will not have any answer for that. I'm telling you, you will not have any answer to that because it's actually stale data. It's actually R&D is missing there.
You cannot ask anybody to go and play around that area because you couldn't find data, because you never know. Next Sunday, the data, a patent can get published, which is exactly doing what you asked him to do, right? Exactly that can happen. So we don't talk about all that. So what you said, don't even talk about what you're doing, as in, don't mention patents as such. You talked about technology research, which is good enough. You are closer to the technology. And during your technology research, day-to-day activities, you get exposure to patents as well. And because you get exposure to patents, you read a lot about patents, and you love the way they are written. You love the way it loves the inventors to protect them in the techno-legal domain, in the techno-legal language. So, and I wish to get into the field of so far I'm assisting from the technology side by doing my research. I would want to expand my capabilities to assisting them in uh, patents as well, in terms of patent knowledge as well. So why not so we can think from R&D, but when we think R&D plus protection, it becomes better. So the knowledge of protection only will come when I know the act, that what all can be patented, what all solutions are available there, right? Because I see some publication is available, some patent is already published. So does it mean I cannot have my own patent? What do I need to do? So I learned about inventive step. I learned about non-obviousness. So this actually has expanded my thought process. Even though there is a solution provided by a patent, there is another patent that can be filed. Otherwise, when we search on, let's say, uh, any particular solution, you can have 10 patents around it, right? So there are Yeah. 10 patents around it. It means 10 patents are allowed if they have inventive step, if they have non-obviousness to it, right? So this is expanding my thought process. And just by reading through the act or preparing for this examination has expanded my thought process so very much. Now, when I see a problem statement, I'm readily able to see that, oh, I can have a solution which can be invented. Or I thought my invention was, as people say, I should patent it. But I don't use patent it so casually now, because I know to patent it, I need to be inventive. To patent it, I need to be non-obvious. Like this, you don't be in hurry to push your patent landscape. Don't say that. Technology Okay. research should be your dead stop. Okay. Okay, perfect. Yeah. Now, because you have prepared for, okay. So my next question would have been, why do you want to become a patent agent, right? So, so the bridge is there, but then So because you are already doing technology research, you are expanding your horizon now to go into the techno-legal side of it also, right? And it helps you to do yeah, R&D. It helps you to think like an engineer now. That what solution is patent eligible that way. Okay. That way. yeah, got it. See, after that, if I have to ask you, I'll ask you, what technology domain do you really work with? Basically on carbon capture, recycling, and clean energy space. Amazing. See, such a great domain now. So in that domain, first question would be, see, we have garbage problem everywhere. Or let's say we have what's happening in Delhi, the pollution everywhere. So do you think inventions around such area should be made available, basically CL, can we apply CL to this? If I were to ask you a question. Yeah, we can apply CL to this if inventions are already in this space, like in a similar fashion, like carbon capture space inventions are already here. If that is severe to the public and that goes into the national emergency, like Grab 4 is applying in the Delhi, in those kind of scenario, those inventions should be applicable. Perfect. Very So good that answer. Right? the So now if you were to say this, so now what kind of what kind of capabilities or what kind of licenses would be favored in such cases if government were to give CL onto it? So for CL, it will be basically for, I can say, the non-commercial purpose, so that the government can allow any third party to manufacture that particular article, and that can be set up. So it cannot be sell purpose. It will be for the public utilization only. So on that, those term and conditions, the CLs will be provided to the whoever is bidding on that thing So after the notice what from the what government. are what are the three pointers that the examiner need to Yeah, check three off? pointers. It should be reasonably available to the all of the individuals, and it should be available at the affordable price. And it should be working in India, not like we are importing from China and using it. That's not the condition.
it No, should be no, working no, in no, India. no, 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 no. I'm just trying to stress you. The thing is, from the licensee point of view, what can Javier apply for CL? Yeah, for from the perspective of the licensee, the invention should be at least after the grant. 3 years period should be passed on. After that, I can apply for it. Even I should have tried for getting the license also from the patentee in the last 3 years from a good reasonable term and conditions. In on those conditions, I should have a fail attempt or the patentee doesn't giving me the I can say the licensee or I can say that denying my request. In those cases, then I go for the licensing thing. If, I should if have first doctor, tried if, to reach out there. so Javier has done all this. His bank balance is 1,000 rupees. Can he apply for CL? No, no. We will be, government will also checking the person should have a financial capability and the manufacturing capability related to that invention. If they This have was the, this experiences, was the, this is what I was that, asking you. This is what I was asking you, okay. right? Everything else is already set. If there is a severity, CL is okay. But then who all can apply, right? So there are words like capability and ability, right? Person's Yeah, capability and person's ability, right? So these two have to be there. Otherwise, everybody and everybody's mama will go and ask for CL, na? It's not like this. yeah. Perfect. So now this is done. That is done. What else can I ask you? So okay, uh, can you think of an invention in the same space? Let's say clean energy space. Can you think of an invention? Yeah, Anything simple. simple solar photovoltaic cells. If somebody is innovating different injection that can increase the efficiency of conversion of sunlight to the electricity, even a Okay, 1 or 2% stop, increase stop in there, stop there, efficiency. stop there, stop there. Now tell me the critical elements of this invention. Semiconductors, the way they are creating PN junction, that will be the criticality, how the layers are there and how much material is utilized. During the scenario, semiconductor is limited availability. If I have an invention that will require the limited number of the reduced amount of those semiconductors, it will have an inventive step Write a technically write to a achieve write same a performance. write a claim for it, please. Give me a claim for this. Uh, Claim will be for a semiconductor. Yeah, I have a simple invention. Uh, Up system or method of producing a solar photovoltaic cell, wherein part A comprises of layer A, L1 layer, L2 layer, L3, characterizing that L1, L2 are, I can say they consist from the group of periodic table. Group 4, maybe I can say the layer 2 and layer 4 will be from the selected from the group of element uh, 2, and after wherein the layer 1 and layer 2 are into the bandwidth, or I can say that in the ratios, they have a some signifying in terms of the width or thickness of their layering. So that will be my first independent claim, which will Okay. include the layers, their material, and So width. how many types of independent claims are there? Uh, They are maybe product and process. I'm sure there are product claim and the process claims are there. Apart from there are two or more three types of the claims. I'm Okay. not What was aware the of completely yeah? all. So what was the claim that you had written? How did you start the claim? A system and method. A The system and at that method. time I claim. Can you write a claim like a method and a system? You cannot claim two things in one claim, right? So you cannot Yeah. say a method and a system. You can either claim a method for doing something, or you can have a claim which is a system for doing something. You cannot have a method and a system, method or a system. Every claim has a class to it. So is it a system claim? System in India, it's called apparatus claim, or a method or process claim, right? You don't have hybrid claims. So you are doing everything correct, but as soon as you say method or process, method or system, get zero, right? Yeah. So in short, so when we have read so much, we need to know that there are different types of methods with different types of claims, system set, method set, and method of use or system for doing something, right? You don't have combination claims. There is Okay. nowhere in the world you have combination claims. Okay, good. So far you're doing good. Now, do you know anything about PCT? Yeah, Patent Cooperation Treaty.
Yes or no? Don't say anything else. Yes, You yes, say, yes. if you say, more questions will come here. Yes, I know about it. What is the main use of PCT? PCT to it ease out the process of filing in n number of countries. If as an inventor I file How a many particular countries are there? How invention, many countries are there? exact number I don't know, but it will be more than 153 companies. I'm happy with that Countries. answer. I'm happy with that answer. Now, you say ease of filing. How does it ease the filing? So as an inventor, if we are going to filing with the conventional route, first I'm filing in India, then I read to the EPO and the US, I have a timeline of 12 months. So by the PCT route, I can file a single PCT application. I have a time period of 30 or 31 months to decide in which n number of countries I want to file. Maybe in Japan, I can cover out of those 153 countries, I can select any number of countries by a single application. So is there a minimum number of countries that you need to have before you decide whether you want to go PCT route or convention route? No, as such, there is no criteria minimum. I can select n number of countries. In the end, it's up to me. I can move in there or not. It's up to me. There So is no don't you think criteria like PCT is an additional cost to the applicant? it's an additional cost, but it's also beneficial. If I want to save my invention in, I can say that across the geography where my product will be launching. So With the answer to respect to the that, it's answer to this is you pay to buy time. You pay okay. to buy time. That's it. Okay? The question that I wanted to ask is, when does a PCT application get granted? PCT doesn't grant. It's just a Sorry, 3-year period sorry, so that sorry, you have. sorry. Nobody's going to ask you that. I just wanted to have fun with you. That's it. Nothing else. Okay. Okay. So PCT is just a post office, right? So now, because they have to run their show, they have to provide services also. So they are providing searching services, they are providing examination services, but their search report or their examination report are not binding. No, we don't need to worry about whether they say our invention is useful or not, whether invention is inventive or not, because every patent office will have their own way of doing things. Okay? So this is good. Now, this is fine. Is there, so as per PCT, Indian applicants get some discount, 90% discount, right? In the fees. I'm not aware of that. If Now you're you know, saying right? I So get now you know. So तो next question तो पूछ ही नहीं सकता मैं. ठीक है. So my next question was what kind of applicants? For others also, what kind of So applicants? I have a simple guess. It can be a SMEs or the educational institute. Wrong. It's only individuals. Okay, individuals. Okay. Only individuals. If you have a company here, so even if you are based out of India, you don't get any discount. Only Indian applicants, which are individuals, get 90% discount. So instead of Okay. $1,000 fee, it would be $90 fee. That kind of a discount is there. Okay. What else? This is good. Acha, do you know anything about patent highway? Patent highways, yes. PPH, patent पेटेंट prosecution highway. प्रोसिक्यूशन हाईवे PPH, yes. No, I have no idea about it. मेरे वीडियो जयवीर सिखा देना और अभी ठीक सर है. अभी आप बोल रहे हो उसी साथ में प्रोसेस हो रही है So PPH, right? So PPH is very important because see, India was doing some pilot with Japan, but then since then they have not even told about any update on it. At the same time, US has gone ahead with their PPH program with 5 more countries, and they are continuing it. So in short, PPH means, because as you said, we use PCT to file in multiple countries. Each country reviews their patent application as per their act, as per their interpretation, as per their examination process. But if a patent application gets granted in US, it can get rejected in Europe, it can get rejected in UK, it can get rejected in India, right? But that's unfair, isn't it? You are filing same application, almost TRIPS has asked all of us to behave in a similar manner. That's why TRIPS is there, right? So then also examination process is different. An individual inventor is not getting grant here, but getting grant there. So what this PPH says is, if there is an office which has found your claims to be in allowable manner, you can use those claims and submit it to another patent office saying that Japan has identified these claims to be allowable. Hence, you also grant. So they also grant. So it's actually reducing the headache on everybody's plate. So US, China, Japan, Europe, another countries there. These 5 folks are kind of, they can exchange their, and we were only working with Japan.
and that also there is no status update. Earlier they were allowing about 100 applications to go in that route per year, and those 100 applications used to get filled up in a month's time that way. So because the process becomes too fast, right? If Japan has granted your patent, that's it. India will grant it. If India granted the patent, Japan will grant it. That kind of stuff. But I don't know whether they went ahead with it or not. What else? I can keep asking here, it's fine. But then you get the gist of it, right, Pradeep? You get the gist of it. Yeah, I get it. So don't say why you are doing something. Let them ask why you're doing it. Like you said, Okay. technology research. Why do you want to say patent landscape? Why do you want to say white space? Why? Let them, they are sitting to ask questions too. Let them ask questions. Don't say, keep it short, your responses to the point. Okay? Okay. Okay. 4:45. What else? Anybody else? Jayvi, जी सर, हाँ, एक शीतल मैडम का एक क्वेश्चन था हाँ, कि सर, so far I was a homemaker हाँ, and restarting my career now. हाँ. Should I be telling this at the time of introducing myself in a Viva? Will this impact in a negative way? What's your opinion, sir? Yeah, like just so far I was a homemaker and restarting my career now. Should I be telling this? Will this impact in a negative way? Okay, so Sheetal, can you come online, please? You can talk. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Sheetal, have you worked anywhere? Sir, my husband has a law firm, so I was doing simple trademark work, which I started from last 1.5 years. So with Are you that a only I trained? came to know about a bit. Yeah, I'm advocate as Okay. and Okay. So BSc Viscom was my undergraduation. Later then I did my law. okay. So basically, see, coming back to earning is never a negative point. Is never a negative point. And for somebody who has handled their home, for our female participants, basically, it's never seen as a negative point at all. It's always considered as a kind of a, it shows that you have that entrepreneur side to yourself, that you want to become a bread earner, you want to support your family, you want to create your own little tiny spot in the universe, right? All that. So nothing will go. But then I would then also suggest you that don't say you are a homemaker, right? Yeah. You should always say that you are doing something. Homemaker is also fine, but then uh, so but then there has to be a starting point somewhere, right? So like you said Yes. that you already have a family law office, right? Your husband's Yes. Yes. so you Yes. can say that I am part of my Law family firm. office, family law Yes. firm. Yeah. My husband runs it. I am assisting him as a associate now. Because I have a science background, we would want to support our clients who come from technology background, and I have inclination towards technology. I learn technology. I love technology. Blah blah blah. And then you Yes. go and create a story with it. That's it. See, the thing is, this is not a job interview. This is not a Okay, job sir. interview. And nobody is giving you a job after this. You have to Yes. do on your own. You have to either own your consultancy, go find a job for yourself, find a Abhay Porwal who can give you a job, find somebody else who can give you a job, but then it's not a job. So, Mm. and nothing happens the next day you become a patent agent. You don't start attending a class somewhere or course somewhere, right? So it's just Yes. a classification. It's just a qualification where now you are a patent agent and you are legally allowed to support the clients. That's it. So don't worry. You give your introduction and they will be happy to learn your story. I'm so proud of you that you're coming back to the main field. Okay. Thank you, sir. Thank you for You the support. you can switch off your video. It's fine. Thank you. Yes, sir. Thank you. अबे सर, मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू डोंट माइंड. अरे सर अबे बताइए, सर. कौन कौन बात कर रहे हैं? दिनेश जी, हाँ बताइए. जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जॉब तो वो नहीं दे रहे हैं, फिर भी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? मार्क्स कम क्यों देके जा रहे थे? जो बंदा 50 नंबर उसमें ले आया फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में भी नंबर अच्छे ले आया, तो मेरे ख्याल से पेटेंट एजेंट बनाने के लिए उनका जाना तो कुछ नहीं चाहिए, बल्कि यार उनको आपकी तो बात, बेनिफिट ही है. नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर कई बार क्या हो जाता है यार, सी अभी आप, ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाइवा का मकसद क्या है, मतलब जी what is the, see, corruption is everywhere, right? जी And corruption is everywhere, interpretation is everywhere, personal kind of
the vibes are everywhere, right? Somebody may like me, somebody may not like me at all, right? So vibes का भी game है बहुत. So जी long ago, I think Supreme Court या कोई one of the courts actually came heavily on the patent office because of the Viva only. Then why do you have a minimum passing marks in Viva? जी Viva should not have any minimum passing marks because they were using that as a tool with them, right? They may not be using them as a tool, but that was a tool with them. Let's say that way. They may not have a negative intention behind it, but then they had a tool. कि नहीं पसंद आया 24.5 दे के रख दिया, राइट? 24 मैं दे के वही रख कह रहा हूँ सर, हाँ मतलब उसका कोई तात्पर्य बनता नहीं है व्हेन यू हैव क्लियर्ड बोथ द एग्जामिनेशंस एंड व्हिच टू आर वेरी एट ए गुड लेवल, है ना, द समवन हु हैज क्लियर्ड इट, so he must be equipped with the knowledge. Yeah. See, in fact, see, if we were to talk about the veracity of Viva or requirement of Viva, finally, see, this is a profession where you have to build your own credibility. If a client comes to me and if they like my way of working, if they like my way of understanding the technology, understanding the act, providing them strategy and all that, they will come back to me or they will refer me to somebody. If This I'm is not it, sir. able to do my thing, like with advocates also the same thing, right? If I'm not able to present my client or represent my client well, then they're not going to come back to me. So Definitely, sir. I actually don't know what they are seeing in you. मेरा एक ही स्पेकुलेशन है. मेरा स्पेकुलेशन ये है कि they just want to ensure कि जिसने आंसर लिखा था वही यहाँ के बात कर रहा है. That's it. हाँ मुझे ये लगता है और कुछ नहीं लगता मुझे, जी क्योंकि लिखने आपने लिख दिया है तो इसका मतलब आपको एक्ट तो आता ही है. हाँ तो अब ये यहाँ आके अगर आपकी जबान ही नहीं खुल रही है, इतने इंट्रोवर्ट अगर आप हो, तो क्लाइंट से कैसे बात करोगे, राइट? जी अब हो क्या जाता है इसके अंदर, दे डोंट क्रिएट क्लाइंट सिनेरियोज देयर, दे स्टार्ट asking academic questions again and again on the same level that लाइसेंसिंग की इतनी परिभाषा बताओ, उसका ये करो, उसका वो करो. तो कई लोगों जैसे मेरे जैसे लोग, we will fall flat on our face if somebody were to ask me definitions. I don't know. Ask me concepts, I will clear everybody's concepts, but then I will fall flat. But then I will not stop talking. That's one thing. So all of us need to understand that we are in this business or we are in this profession where we have to talk to the clients. And in this business or in this profession, clients don't talk. You have to make them talk. तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, राइट? अब वो क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्यों रिजेक्ट नहीं करते हैं, कई बार तो यार ये वाइब्स है, वाइब्स, मतलब अच्छे नहीं लगा यार, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा. अब किसी के पास कोई आंसर नहीं है, राइट? तो आई डोंट नो. तो गुड क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक आंसर फॉर इट. right, sir. The second question is this: I, being a professor and IPR head, so what can be the question to me, since I am also conducting the awareness session for my students, Yeah, the startups, the researchers, the faculty members. I'm already into all such things. yeah, However, I am not into the drafting patent application yeah, because we yeah, have recruited the staff member for that purpose. yeah. So what I can tell them is that after becoming the patent agent, I will start helping my drafters and the patent associates to further in the prosecution and in the searching and the drafting. Yeah, absolutely. What he's saying makes sense. Because see, so आपका भी प्रदीप वाला ही केस है ना. You need जी to expand your horizon. So हम्म, far, see, आपका एक लाइन का आंसर होना चाहिए. See, even though I am doing everything, see, this particular position in the university requires me to create awareness among our students regarding IPR, right? right. And again, our government is behind everybody of innovate, right? Hence, we have Mhm. this position of increasing awareness in our campus as well. So, but we don't have any in-house skill set with respect to drafters or anybody who can actually represent the university at the patent office. Hence, जी I would want to take that as a position. I would want to take that as a challenge so that I'm able to represent my university at the patent office also. I'm able to make everything us other than that, but I cannot come to patent office to represent my university, right? Hence, I want to become a patent agent. And of course, having a nuanced knowledge of the Patent Act always helps when you talk about innovation. Yes, sir. Thank you so much. Sakshi is asking, sir, I do patent searching, various types of IPR. Yeah, hi sir. Yeah. Yeah. So Sakshi, you should always also say the same thing, that you are in technology research.
patent technology research, which requires deeper understanding of reading patents and identifying what patents are saying. So you, in your day-to-day life, you have been exposed to evaluating inventions from are they same, are they obvious to each other. So I'm doing all this, so I got exposure to it, but then I want to kind of further my career. I want to get into prosecution. I want to get in, but as soon as you say prosecution, you will be asked questions about what are the prosecution, as in what happens in prosecution, what is FER, why Okay. FER, and how are you going to respond? All those questions will come to you. We should be happy to answer all that. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. As you have already devoted a time for this. सर ने, मैं पहले से ही कह देता हूँ, सर ने मुझे कहा था कि सर 15 to 30 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, बट विथ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड सच माइंड ब्लोइंग सेशंस विद अवय सर, आपने पूरे 2 आवर्स हमें टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच सर. वी आर, ये हमारे पे ऋण है. अब आप हमें लास्ट कंक्लूजन बता दीजिए कि व्हाट डू यू थिंक कि हमें पेटेंट एजेंट बन के इन सभी लोगों को और मुझे क्या करना चाहिए एज बीइंग अ big brother, as being a experienced person in this domain. You are very much aware about our lacunas, correct sir? So but as being a well wisher of us, what should we do in return to this session, to you, to the nation, so that we can proceed further? वो भारी क्वेश्चन है यार, इसके लिए तो प्रिपेयर करना चाहिए था मुझे, इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया मैं. नहीं नहीं ठीक सर, है यार, आप बहुत ही अच्छी but तरीके से कहते हैं सर. नहीं 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 यार, I don't know यार. See, basically, how are we looking at this? Are we looking at it as a profession? We want to earn our breads through this profession? Then of course, be the best that you can be, right? Acha, Archana has a question, I think. Archana, you can go ahead, please. Archana had raised her hand. जी अर्चना मैम, जस्ट सेकंड्स, आस्क टू अनम्यूट. मैम आप म्यूट है, अगर आप बोल रहे हैं तो आप म्यूट है, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है. अर्चना मैम, इफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन प्लीज आस्क. आई विल फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन टू यू सर. ठीक. हे आ गया कुछ Sir, बाय मिस्टेक. ओके By mistake. Okay. sir, actually, I do have a question. Who is it? यस मोनिका मैम. Monica, sir. Monica. Yeah. सर एज अ फ्रेशर मतलब वो क्वेश्चन क्या क्या, मतलब किस वे में वो पूछ सकते हैं, लाइक जो मैंने एक अपना फ्लो बनाया है, ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप बताइएगा कि लाइक मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पेटेंट एजेंट का जो प्रोफेशन उसके बारे में उन्होंने पूछा, मैंने उसमें बताया उनको कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में और मैंने बैक्टीरिया पर रिसर्च किया हुआ है. तो सर थर्ड क्वेश्चन उनका हो सकता है कि मतलब बैक्टीरिया है ये पेटेंटेबल है या नहीं है, तो उसमें जो सेक्शंस है वो 3J है, लाइक 3I है, ठीक है, या 3D है, इसमें ये आ सकता है. आई थिंक वो फ्लो जो होगा, आई थिंक सर ऐसा हो सकता है, या फिर इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, तो इफ यू कैन गाइड. आई डोंट नो आप लोग को हिंदी कितने आती है, मगर एक चीज होती है, माथा देख के तिलक लगाया जाता है, राइट? तो बेसिकली the question that would ask to you, to me, to Pradeep, to anybody will be completely different. बट जो आपका फ्लो है मोनिका, आई थिंक वो सही है फ्लो, और वही लगता है कि वही फ्लो होने भी वाला है. अगर नहीं हो जाता है तो प्लीज पैनिक मत मार जाना, और कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है. ओके ओके. टेक इट एज एन इंटरेक्शन एंड see, all of you, whoever has spoken to me so far, I find you guys confident, right? I find you guys good with your tongue also, good with your language also, good with your tempo also, right? तो आप बस ये मान के चलो कि सामने जो बैठे हैं वो भगवान नहीं है, सामने जो बैठे हैं वो आपके मालिक नहीं है, ना ही वो आपको नौकरी दे रहा है, राइट? यू आर टॉकिंग टू देम एज अ स्टेक होल्डर, राइट? आप पेटेंट एजेंट बनने वाले हैं और वो लोग कंट्रोलर हैं, उनकी पास भी नौकरी है. आप तो खुद का कर रहे हो, वो तो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, राइट? तो यू आर हेल्पिंग देम टू डू देयर जॉब. तो प्लीज आप बिल्कुल talk to them as stakeholders. Don't talk to them as somebody who's giving you a job, right? You're not there to impress them. Yeah, if you're not there to impress them, but at the same time you're not there to insult them also. You are not there to show them that you know everything. हम ह्यूमिलिटी बहुत जरूरत है, हम्बल रहना बहुत जरूरत है.
आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए कि मेरे को रफ आइडिया है, अगर आप बोले तो मैं जवाब दूं, नहीं तो मैं चुप रहूंगा या रहूंगी, राइट? उस तरह से अप्रोच रखिए। वाइब चेक, आप लोग की भाषा में वाइब चेक करिए। अच्छे, मतलब नाटक करिए अगर नहीं हो अच्छे तो, राइट? मतलब ओके। या तो जेन्युइनली अच्छे हो तो जेन्युइनली अच्छे हो, अपने आप एनर्जी आएगी। अगर नहीं हो तो प्लीज बी हम्बल, अपना ईगो छोड़ दो रूम के बाद, अपने मतलब अगर आपको बहुत टची हो आप, तो वो टचीनेस को बाहर छोड़ दो, इट्स ओके। लेट देम आस्क यू क्वेश्चन, लेट देम ह्यूमिलेट यू, इट्स फाइन। नहीं आता तो नहीं आता। और मगर एक चीज जरूर करिएगा, क्लेम लिखने का, क्योंकि कई बार क्या होता है वो पूछ लेते हैं क्लेम लिख के दिखा दो, तो उसके लिए भी यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल डैम थिंग ऑन अर्थ, राइट? तो प्रिपेयर एक बेसिक स्ट्रक्चर के क्लेम में, बेसिक देखते देखते गलतियां जो प्रदीप ने करी ना, मेथड एंड सिस्टम वाली गलती ना करो, ताकि उसमें क्या होता है वो गिरता दिखता दिखता गलत हो जाता है। बाकी तो उनको भी पता है यार, कौन लिख सकता है क्लेम 5 मिनट में, कौन 5 मिनट में तो एग्जाम के अगेंस्ट टू क्लेम कौन लिख सकता है 1 घंटे के अंदर है? तो जी जी। वो सब बस वो देख रहे हैं कि यार बंदा ठीक है क्या, मतलब एवे ही किसी को तो हायर नहीं, हायर तो रॉन्ग वर्ड है, एवे ही किसी को क्वालिफाई तो नहीं कर देगा ना। और अगर आप लोग अपने एक्चुअली पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे अगर आप 120, 120 में 30 हो जाते हैं, 150 चाहिए होता है ना, पासिंग कितना चाहिए होता है जल्दी? यस सर, 150। 150 ना? अगर आप 115 या 120 आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं। 120, 115, अब 120, है 125। सर, just one correction here. We are जी student of जयवीर सर, जयवीर एंड रजत सर। और कुछ आए ना आए, हम क्लेम जरूर लिख के आएंगे वहां पे, भले ही अरे 5 मिनट में बोले, हम लिख नहीं के नहीं, जरूर आएंगे। ज्योति मैडम, जब सर एम्फसाइज कर रहे हैं ना, अभय सर ने एक पूरा लिंक्डइन पे पोस्ट भी दिया है, और शायद वहां पर उन्नत उन, पंडित जी के रिप्लाई में उनका ये कोट है। और सर अभी इस माहौल में है कि वो पूरे इंडिया को एक स्ट्रक्चर्ड क्लेम्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं, एज बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन जो वो बता रहे हैं। तो वो अब उनकी थॉट प्रोसेस है, और वो आपको दिखेगी अब उनके अपकमिंग वीडियोस में। दैट वाज माय फोरकास्टिंग राइट नाउ। तो सो नहीं सर वो इसलिए पंडित है जी ने ऐसा। भी उसको अच्छे से लाइक किया, पंडित जी ऑल्सो हाँ लाइक हाँ दैट, सर, एंड ही ऐसा हैड, वी हैड वन ऑन वन मैसेजिंग टू ईच अदर ऑल्सो। वो अभी से नहीं, जो चीज मुझे नहीं पसंद आती वो नहीं आती, अरे क्यों कर नहीं रहे हो है ऐसा? आपका वो तो फिर परफेक्ट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेशन है। तो नहीं नहीं, तो फिर भी आई कैन नॉट सी, मैं उसी बिजनेस लाइन में हूँ, आई एम, सो वी कैन सी द आइडिया इज टू टेक इट फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट? जी। तो उस तरह का ही है। और कुछ तो आप सी, अगर आप क्लेम लिखने जाते हैं तो नथिंग नथिंग बेटर देन दैट। मेरा आइडिया है कि डोंट ओवर डू एनीथिंग, इट्स फाइन। देर इज नथिंग रॉन्ग, देर इज नथिंग राइट। क्लेम के अंदर आप कुछ भी लिख के आ जाओ, उनको अगर गलत साबित करना है वो गलत साबित कर देंगे, फिर क्या करोगे? उसी में लड़ते रहेंगे क्लेम में। ठीक है सर, आई विल करेक्ट इट, ठीक है, आई विल इम्प्रोवाइज ऑन। पता होना चाहिए एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, व्हाट इज प्रिएम्बल, व्हाट इज आपका अलग अलग जो भी जो चीज आती है वो सब पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ट्रांजिशन फेज एलिमेंट्स। दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ओके, काफी नहीं भारी नहीं हाँ नहीं डिस्कशन हो हाँ। रहा था सो। नहीं अरे नहीं, वैसे तो आज सर ने बहुत जयवीर जयवीर बोला, मगर मुझे सर अभी 2-3 बार उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है, वो बोलते हैं जयवीर बाबू कैसे हो आप, एंड आई आई वुड लाइक टू एंजॉय दैट दैट सेंसेशन। मुझे सर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ना आपका पर्सनल फील आता है, जयवीर बाबू बोलते हो तब। जयवीर बोलते हो इट्स लाइक अ प्रोफेशनल, जयवीर बाबू बोल दिया तो मैं वैसा बंदा हूँ सर, मुझे कोई अगर पेट नेम से बुलाए ना, तो आई वुड बी मोर हैप्पी कनेक्टेड विद हैप्पी दैट टू। पर्सन। तो ठीक है एवरीबडी, अगर आप लोग को फाइनल कुछ भी क्वेश्चन है तो बता दो, अदरवाइज क्या मैं रिपीट मोड में चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता क्योंकि सर वो फीडबैक लेता आपका हूँ। बहुत अच्छा है, यानी आप हर बार सोचते हो पहले कि ये इसके इफ एल्स बट ये आएंगे, फिर जाके आप कमेंट करते हो। बहुत बड़ी आपकी एबिलिटी है सर ये तो। बस कितना ही आप, और वो छोटा सा पोज अभी मुझे पता चला कि आप हर एक के बाद एक हाफ सेकंड का पोज लेते हो, उसमें आपने सारी चीजें एसेस कर ली होती है। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा बोले भी आप अभी 2-3 बार यार इससे। यार 24-25 साल हो गए हैं यार, 20-22 साल हो गए हैं काम करते हैं। तो हमें भी सिखा दो सर, हम भी सीखना मतलब चाहते हैं आपकी तरह। तो आदि, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ आदि इज स्टिल अराउंड, नहीं। आदि हाँ वाज सर, सारिका वाचिंग। मैम। नहीं सर, मेरे जी पास तो नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है, सारिका तो मैम एंड गंगाधर सर थैंक यू। हैविंग ए क्वेश्चंस। प्लीज। लास्ट 2 क्वेश्चन वी कैन सिंपल। टेक। जी। हेलो जेवी सर, सिंपल क्वेश्चन है जी। मेरा, जनरल। जी। लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है आपके सक्सेस और लाइफ के लिए, जो अभी रिसेंटली? लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में अगर हम कम्युनिकेट कर इंग्लिश पाते या हैं, हिंदी? हाँ, लैंग्वेज तो कितना इम्पोर्टेंट इंग्लिश होता है? आना जरूरी है क्या? लैंग्वेज से मतलब तो वही है ना हम्म सारिका मैडम, इंग्लिश का ही मेन तो हाँ प्रॉब्लम है हाँ ना। हाँ सर, हाँ हाँ सर, अच्छा लैंग्वेज। इसका ओके।
आपने तो उसे सिंपल तरीके से पूछा, मगर आप मेरे से सिंपल आंसर चाहते हैं या फिर ऑनेस्ट आंसर चाहते हैं या फिर पेचीदा आंसर चाहते हैं? ऑनेस्ट वन सर सर, सिंपल जैसे आप और हो। ऑनेस्ट, हाँ ठीक है, सिंपल और तो देखो, ऑनेस्ट आंसर सी चाहिए। मैं एक चीज बोलूंगा विच इज वेरी वेरी क्लियर, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सी ट्रेडमार्क में इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो ना हो, पेटेंट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। See, even though during hearings, at times examiners or controllers start talking in Hindi also with me because पोरवाल सुन के उनको लगता है कि नॉर्थ ही है, हिंदी आती ही होगी, और मुझे हिंदी आती भी है, बट मेरा ये है कि अगर जब मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ तो मेरा अपने आप मोड चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि इंग्लिश इज द वे टू गो। बट देन मेरा ये मानना है कि सी डिपेंड बेस्ड ऑन, जैसे अभी अपना ये प्लेटफॉर्म है, अगर यही प्लेटफॉर्म मेरा कुछ और होता तो मैं शायद तक हिंदी बोलता ही नहीं, और आप लोग के साथ हिंदी बोल पा रहा हूँ, इट्स फाइन। बट आप किस चीज में अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपका ऑडियंस कैसा है। अगर आप हिंदी को टच करके चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपका ऑडियंस या फिर क्लाइंटेल या फिर आपके जो इंटरेक्शन है वो केवल हिंदी मीडियम में ही होने वाले हैं, तो फिर कम्युनिकेशन इज हिंदी, फाइन। मगर अगर आपका कहीं पर भी ग्लोबल स्टेज आने वाला है, या फिर कहीं पर भी, जैसे आप अगर बॉम्बे साइड मूव करने वाले हो, या फिर बैंगलोर साइड मूव करने वाले हो, हैदराबाद साइड या चेन्नई साइड, राइट, तो देन इंग्लिश हैज टू कम, राइट। हिंदी सब जगह चलता है, बट देन जब आप इन्वेंशन डिस्कस करते हो, राइट, तब मुझे नहीं समझ में आता कि हिंदी में कैसे इन्वेंशन डिस्कस होता है, मेरे को नहीं आता। कर सकते होंगे बट मैंने नहीं किया है। और वो भी अगर करते हो तो क्लेम हिंदी में कैसे सोचते हो, वो नहीं आता मुझे। क्योंकि इन सब चीजों के लिए सोच भले ही हिंदी में लो, लिखना और बात तो इंग्लिश में करना ही पड़ेगा। मगर ठीक है, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड विद दैट। अगर आप सोचती हैं, सारिका थी ना, अगर सारिका आप सोचती हैं कि आप हिंदी में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं और सब, इट्स नॉट बिकमिंग अ हर्डल एट ऑल, तो क्यों नहीं, इट्स ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां जहां इंग्लिश, इंग्लिश से भागिए मत, इंग्लिश से भागिए ओके मत। ओके मौका मिले तो बात इंग्लिश में ही करिए, अगर कर सकते हैं और करना चाहते हैं। ओके सर, हैविंग थैंक यू। सेड दैट, लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम। गंगाधर बात कर रहे थे। Yeah, hi sir, Gangadhar this side. हाँ जी। Sir, currently, like I am a recent graduate with Bachelor of Science, and I have a 3 years of exposure in IP. I'm currently working as a IP paralegal, handling trademark, patent, and design. But what I'm trying to introduce myself during the Viva voice, like I am Bachelor of Science graduate, and currently I'm working in as a paralegal only. That's it. Or should I just mention कि I am fresher in this field, like I have no prior work experience. No, no. So Like I you don't see, know. no, no, no. It's okay. So it's okay even if you don't say paralegal too. What you need to do is you are part of. Are you part of a law firm because you're a paralegal? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So you are associated with a law firm and you are undergoing a training or you are shadowing somebody for providing patent related services. That's it. Paralegal नहीं बोलने का। Okay, sir. Okay. तो Okay, पैरालीगल sir. बोल के कुछ गलत नहीं हो रहा है, मगर पैरालीगल बोल के आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो और कुछ। Yes, sir. क्योंकि आप एसोसिएटेड हो, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। यू आर प्रोवाइडिंग पेटेंट रिलेटेड Yes, sir. सर्विसेज, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अब क्या कर रहे हो, तो आप डॉकेटिंग करते हो, आप 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 टाइमलाइंस मैनेज करते हो, आप कंप्लायंसेस मैनेज करते हो। किसके लिए करते हो? आप जिस लॉयर या पेटेंट एजेंट के लिए काम करते हो उनको आप उन, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द टाइमलाइंस, यू आर अवेयर ऑफ द कंप्लायंसेस, यू हेल्प देम और यू हेल्प द क्लाइंट्स आल्सो, उस तरह से। ठीक Yes, sir. है, थैंक Okay, sir. Thank you, sir. यू। हु एल्स? कोई और भी है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। सर सर थैंक यू। अब इतना टाइम लगा ही अश्विनी चुके सर। हैं तो थोड़ा और ले लो यार, क्या दिक्कत है? सर अनिल हियर। कहाँ पर? यस सर। ओके ओके, somebody need to say यस something. अनिल सर। यस सर, बहुत बार तो छोटे छोटे इन्वेंशन आते हैं हमारे पास, तो उसको फाइल करना चाहिए। एक्चुअली इतना बेनिफिट भी नहीं होता है ना, एज टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और ये तो भी फाइल करना चाहिए उसको। हम्म, पता नहीं यार, मतलब किस तरह से पूछ रहे हो? एज अ सर्विस प्रोवाइडर पूछ रहे हो या फिर एज अ इन्वेंटर पूछ रहे हो? नहीं सर, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, उसका हम्म, ज्यादा बेनिफिट नहीं है,
एज अ नेशनल या इकोनॉमिकल बेसिस पे वो इन्वेंशन का, बट ही वांट टू फाइल दैट इन्वेंशन एज अ पेटेंट, तो उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए हमें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। अगर एप्लीकेंट आया है तो कोई भी एप्लीकेंट नेशनल के लिए नहीं आ रहा है, वो केवल इकोनॉमिक के लिए आ रहा है सही अभी, और फॉर द टाइम एकेडमिक के लिए भी आ रहा है कि हाँ मेरे नाम पे हो जाए। आपको कैसे सोचना है, देखो एज अ पेटेंट प्रोफेशनल हाउ डू यू नीड टू थिंक इज, यू नीड टू इवेल्युएट उसका इन्वेंशन को इवेल्युएट करना है, और उसके इन्वेंशन को इवेल्युएट करने के बाद बताना है कि आप जो कर रहे हो बहुत ही नैरो है, राइट। और ये नैरो करने के बाद पेटेंट आपको अगर मिल भी जाता है तो भी आपको फायदा इसलिए नहीं क्योंकि आप यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर इन्वेंशन। फायदा फाइनली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पेटेंट मिलता है तो यू शुड बी एबल टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर इन्वेंशन, इजंट इट। आप यूज नहीं कर पाओगे, आप दूसरों को स्टॉप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका इन्वेंशन बहुत नैरो है। अदर्स कैन एक्चुअली बाईपास योर इन्वेंशन, इफ अदर्स आर एबल टू बाईपास योर इन्वेंशन फायदा ही क्या है। बट द डिसीजन इज देयर्स, डिसीजन इज नॉट आर्स। आर्स इज ओनली टू से नैरो मिलेगा, दूसरों दूसरे इजीली इसको बाईपास कर देंगे। इकोनॉमी है नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमें बस ये देखना है कि क्या आई विल बी एबल टू स्टॉप अदर्स ऑन, इफ नॉट देन नहीं। उसको करना है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ये पेटेंट एजेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, बट सर फिर ये वाइवा वाइवा कितना मिनट का रहता है टोटल? माथा देख के तिलक लगाने वाली बात है भाई। किसी का 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 10-11 मिनट। मैक्स टू मैक्स 10 to 12 minutes। हाँ, बेसिकली यही होता है कि जैसे अभी जैसे प्रदीप स्टार्टेड, राइट। He started with technical, whatever he was saying. I was making notes for him. But then what he said was 6 years in technology research, assessment, and then conducting patent landscape to identify white space. इसने इतने सारे कीवर्ड्स छोड़ दिए थे उनके लिए कि आओ कोई सा भी कीवर्ड्स पकड़ो और स्टार्ट करते हैं बात करना। नहीं, मतलब इट्स अ गेम दैट यू नीड टू प्ले विद मिनिमल फॉरवर्ड लुकिंग चांसेस। इतना बोला मैंने। अब इसमें से देखो क्या क्वेश्चन मिल रहा है आपको, पूछो, उसका जवाब दूंगा, उसमें से क्या क्वेश्चन मिलेगा पूछो। सर एग्जामिनर का ब्रेन का कंट्रोल कैसे लेना है जैसे आप ताकि अभी मेरा मुझे ले जो रहे हैं। क्वेश्चंस आ जाए ना, मुझे जो आंसर आ रहा है ना, वही हाँ, पूछे, वो कैसे लेना है? यार वो क्योंकि मैं बहुत हमेशा यही करता हूँ, मैं ना तो बिना फिर प्रिपेयर के जाता हूँ, उसका मैं फिर पूछता हूँ, फिर मेरा गांव पूछता है, उसका गांव पूछता है, वो कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता है, और मेरे फिर को तो ना ठीक अच्छे है। मार्क देके छोड़ देता है। तो तो फिर वो तो यार, कैसे करना तो फिर है? सो फिर ये तो अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं इसके अंदर तो फिर तो आप मत सोचिए फिर। मगर एट द सेम टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग दैट अगर वो 5 क्वेश्चन लेके बैठा है अपने साथ कि हम्म, मुझे ये 5 ही पूछने हैं, तो वो 5 ही पूछेगा। वो फिर कुछ नहीं और नहीं पूछेगा। वो अपना गांव का नाम बता देंगे तब भी वो पूछेगा अच्छा सॉफ्टवेयर पेटेंट बताओ। फिर आप हम्म, बताओगे कि मेरा देश ये है तो फिर भी पूछेगा नहीं अब मुझे सेक्शन 3 भी बताओ। तो कई लोग हम्म, ऐसे होते हैं दे डोंट एंटरटेन डिस्कशंस। उनको हम्म, 5 क्वेश्चन पूछने हैं और फ्रेमवर्क में 5 क्वेश्चन पूछ के चले जाते हैं, बस यही करते हैं। अच्छा, Really think from their side also. They are sitting from morning to evening, talking to हम्म, people, all kinds of people, 5 minutes, 10 minutes, and then multiple kind of few good folks comes, few people kind of play around with their ego also, emotions also, right? So you don't know. तो बट ठीक है, आप जाइए अपने नॉलेज के साथ and let कुछ it let है it ना, happen. ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में भी रहते हैं ना, जो क्वेश्चन हम लोग को जो पूछना है उसके उधर से उससे आंसर लेके उसको फिर अपने बॉटल में डालना है, ये भी रहता है या कि 5-7 मिनट के अंदर। इंटरव्यू का जो एनएलपी मास्टर रहेगा ना, तो वो हाँ, कर सकता है, मीन्स भले रहे अपना पढ़ाई रहे वो स्पेशलाइजेशन रहे, लेकिन जिसको नहीं एनएलपी होता है आता है वो मगर मेरा क्रैक कर मेरा सकता है। मानना ये नहीं नहीं मेरा मानना ये है कि the direction that the interview will go will first your resume. In that resume, what technology you have talked about or what job profile you are in. From that job profile, they will start digging in. वो है तो बेसिकली इट्स यू ओनली हु स्टार्टिंग इट, नथिंग मोर। उसके बियॉन्ड तो अगर उनको वहीं ब्रेक करना है और 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लेंगे वो। अगर मैं बोलूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, 27 साल का एक्सपीरियंस भी है मुझे, और मैं आईपीडी में काम कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, कंट्रोलर मेरा दोस्त है, हम लोग खाना खाते हैं, तो नहीं, डोंट फॉर डोंट ईयर्स गो ऑन। ना, नहीं ये नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं बोलना नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, आईपीडी कंट्रोल। में काम कर रहा है तो बोलना चाहिए ना कि आई आई एम पार्टी। आईपीडी में आईपीडी में आईपीडी काम का कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा हूँ, तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इंडिया में। हाँ, वो बोल सकते हो, आईपीडी बोल और सकते हो, विजिटिंग कंट्रोलर नहीं। प्रोफेसर फॉर द कॉलेजेस वगैरह हूँ, हाँ हाँ, आप कॉपीराइट सब बोल वगैरह सकते तो आईपीआर, वो वो बोलना कदम सर, चाहिए। अगर इंटरव्यू अच्छा जाए ना तो फिर ये लाइन बोल देना है वो 40+ मार्क्स लेने के लिए। मगर पहले इंटरव्यू देना है हमें। पहले हमें हमारा नॉलेज बताना है कि इसके साथ में इतना मैं काम कर रहा हूँ,
बट साथ में मेरा नॉलेज भी बहुत उतना तगड़ा है। वो अगर एक बार एम्फोसाइज हो जाए ना, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका स्टेटमेंट जो है, वो बहुत मजा आ जाएगा उसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अश्विनी सर, आपने अनम्यूट किया था, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सर, उस टाइम मुझे कुछ क्वेश्चन एकदम ही सडनली स्ट्राइक हुआ था, बट मैं अगेन वो निकल गया। बाकी एक सर सिंपल क्वेश्चन है जो अभी आई थिंक सर ने बोला भी था पहले, कि सर अगर जब हम पेटेंट फाइल करते हैं तो एज ए लीगल फर्म के थ्रू कर सकते हैं या एज ए पेटेंट एजेंट ही हमें करना चाहिए? नहीं, लीगल फॉर्म साइन तो नहीं कर सकती ना, जी सर, साइन एजेंट नहीं कर। एजेंट ही साइन कर सकता है। अब एजेंट किसी लीगल फर्म के साथ काम करता है तो वेल एंड गुड, मगर उसमें एड्रेस आएगा बस। मतलब इसमें लीगल फर्म का ना तो कोई स्टैंप लगता है, केवल जी पेटेंट एजेंट का स्टैंप लगता है, सिग्नेचर लगता है, और जो जी। एड्रेस ऑफ सर्विस होता है उसमें लीगल फर्म का नाम हो सकता है, मगर एजेंट ही फाइल करता है। ओके, नहीं एक्चुअल रीजन इसका पूछने का था सर कि क्योंकि जब कल टैक्सेशन की बात आती है, जब टैक्स फाइल रिटर्न फाइल्स करते हैं, तो उस टाइम पे जो फाइलिंग होती है, क्योंकि अगर एज ए या जैसे मैं एज ए पेटेंट फैसिलिटेटर काम करता हूँ सर, तो वहां से जो मुझे पैसा मिलता है, तो वो जो पैसा है वो आपके पर्सनल एसेट्स में आते हैं या उसको लीगल फॉर्म में भी के थ्रू दिखाया जा सकता है? मतलब आई एम नहीं टॉकिंग इन वो टर्म्स ऑफ। नहीं नहीं वो तो आपका लीगल फर्म का ही इनकम है ना। हाँ नहीं, बट वही है सर कि मतलब फिर पैसा लीगल फॉर्म में के अकाउंट में आता है, उसमें कैसे करना मतलब वो क्या रहता है सर? वो थोड़ा सा मुझे गाइड कर पाएंगे इस चीज को? नहीं नहीं, see, इसके अंदर तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप यू आर प्रोवाइडिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज हियर, राइट? करेक्ट So सर। when you're providing professional services, the professional service always will be part of your legal firm, no? So when we are filing the bills, so at that time we have to give the account detail of firms, because firm name will then the account person and name will come as a law firm name. Whereas वो when मुझे see, मैंने कभी भी एज अ फैसिलिटेटर में काम नहीं किया है पेटेंट ऑफिस के लिए। अच्छा सर, ओके। आई नेवर वर्क, आई वाज फर्स्ट अमंग द फर्स्ट वंस टू गेट एनरोल्ड, बट देन मैंने अपना नाम हटवा दिया वहां से। आई नेवर, सो मैंने कभी कोई बिल, मैंने काम किया मगर बिल आज तक नहीं भेजे उन्हें, तो ठीक है। ओके आई एम सर, नॉट यानी इवन सर एलिजिबल, सर आई एम नॉट शाला है, इवन शाला देयर। सर, शाला है, विथ योर परमिशन, ये इंडिया में थोड़ा पैसा लेना है, बाकी पैसा दुबई में रखना है, नहीं तो चाइना में रखना है, नहीं तो हांगकांग में रखना है। जब जरूरत चाहिए ना तब इंडिया में लेके आना है। ऐसा होता है। मिनिमम कम कमा रहे हैं ऐसे इंडिया के। अपने मम्मी का नाम क्या है? सीतारमन, हाँ। सीतारमन को ज्यादा पैसा नहीं दिखाना है। ट्रू ट्रू। सब लोग वैसे ही करते हैं अपने इतना